and got PhD awarded by interacting with me as a research supervisor, and they were working as their research scholars. But out of this interaction with each other, we could culminate into as many as 24 patents. We could have to our Sorry, credit the tune of around 45. I am sir. visible Sorry to as interrupt you. audible as well. Sir, Yes. you are clearly visible and audible. Just your PowerPoint make in the PowerPoint mode, sir. Presentation mode. PowerPoint. In Yeah, presentation. I will be Presentation putting it mode. in the presentation mode. Yeah. Yes, sir. Now, Please go. is the screen visible? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes. It shows the 60 minutes guide to effective research, process and Yes. skills. Yes, sir. Yes. Okay. So we have here a chunk of around 8-point framework for effective research. And I am more on the side of practical aspect of carrying out the research and converting it either into a research paper, research proposal, research synopsis, and finally culminating into a PhD dissertation. So we will be mainly talking on process and skills. So that is what this title shows here, 8-point framework for effective research. So this may be sometimes a repetition to most of the people who are working as a supervisor, but then it will be refreshment on the side of our concept and ideas. Before starting with the actual framework, let us first look at a case study. This case study is going to be a running example, running through all my subsequent discussions and presentation. So 60-minute guide, though I mention it 60 minutes specifically, but when we are explaining, it goes to 90 to 120 minutes. So let us see how I can culminate into 60-minute guide so as to get a better feel and manifestation of each one of the research ideas. The case study is about neurofuzzy control for performance enhancement of power electronic circuits. Please excuse me. I will join you. I will just join you.
काल असंच झालं. सेफ ड्रायव्हिंग मोड आणि डन स्पीकिंग. इंडस्ट्रियल व्हॅल्युएशनला आहे का? छोटा आहे आता दुपारून. इंडस्ट्रियल व्हॅल्युएशनला जाऊन आहे का? ठीक आहे. करेल मी 2-2:30-3 वाजता 3 वाजता करते. ठीक आहे चला. 4 दिवस झाले ना. मोहितला सोबत नेलं की काय मग तिकडे पाठवलं असेल. भंडारे सरांचं काम खूपच हे झालं. काऊन काय? आता त्यांची मिसेस त्या मुलीला घेऊन तिकडे राहतात नांदेडला. अच्छा. नीटचं प्रिपरेशन करत आहेत सर. मुलाला घेऊन इथे राहतात. अरे बापरे. आणि अशा याच्यात समजा जर आता हे असा प्रश्न आला व्हॅल्युएशनचा. हो. तर मग कसं मॅनेज करतात काय माहिती. त्यात त्याची शाळा आहे, त्याला नेलं तिकडे अमरावतीला. तर आता त्याला सुट्ट्या आहे. हॅलो. नेलंच असेल ना. मग इथे थोडी एकट्याला ठेवणार आहे. नेलं असेल किंवा मग नांदेडला. मग त्याला जर का नेलं तर मग कुठे ठेवणार त्याला? नाही आईजवळ नेऊन सोडलं असेल ना. कारण टीव्ही करून राहत आहे. त्याला घेऊन सोडलं असेल तिच्या आईजवळ. कोणाच्या आईजवळ? स्वतः म्हणजे त्याची मिसेस जवळ नेऊन सोडलं असेल. हा भेटून आला. अमरावतीला जर का नेलं तर अमरावतीला दिवसभर पोरगं काय करून. आपल्या लेकराला वर नेऊही देत नाही ना सोबत. एखाद्या कोपऱ्यात बसणला मोबाईल पाहत तर नेऊ नाही देत. नाही त्यांनी तिथेच नेऊन सोडलं असेल त्याला नांदेडला. 8 दिवस राहा बा तू पण. सुट्ट्या आहेत. आई अभ्यास वगैरे घेते. खाणं आई जवळ तेवढीच. अन्नपूर्णा मॅडम. लेकरांना सर. काय आपका माइक चालू है, बंद करिए. माहित सुरू आपली बडबड ऐकायला तिला चालूच दिलं. NEP जॉईन केल्यानंतर शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म जॉईन केलं. माइक अनम्यूट करा. अनम्यूट करा. अनम्यूट. त्याच्यात मी आणि मॅडम दोघी मिळून सुरू तेव्हा झाला जेव्हा आपलं प्रॅक्टिकल
Sorry. Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Now, am I audible, visible? Yes, sir. एक minute. Just. Is my PPT visible to you? Hello? Sir, make it full screen, sir. फुल स्क्रीन में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि देन माई अच्छा एक मिनट नाउ नाउ हाँ, उसको बड़ा हाँ हाँ यस सर फ्रॉम बिगिनिंग वो भी चलता है यस सर डन स्टडी एक्चुअली व्हाट हैपेंड it is cluttering my screen. But it is appearing perfectly, sir, on our screen. Okay. Yes. चलो ठीक है. And this one. ये बाकी के जो है वो नहीं दिखना चाहिए. Let me see. Okay. So the now visible, audible. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Should I continue? Yes, sir, please. This case study is about one of my students' PhD thesis titled Neurofuzzy Control for Performance Enhancement of Power Electronics Circuits. This is a running case study which we'll be going through while discussing this 8-point framework for research. So, this research work aimed at investigating the neurofuzzy control techniques relevant to the design of feedback controllers in power electronic circuits. This was those who are coming from science technology background, they will be able to grasp it. I do not want that you should go into the technical details of what is the topic. I am talking about when we are culminating on a particular PhD thesis title, and then we start working rather from problem definition to problem formulation to literature review, then analysis, design, then implementation testing, and concluding. So all these parameters, how they are actually implemented, will be shown by taking this PhD thesis as an example. Which is my candidate underwent 3.5 years of work. Basically, it proposed to deal with switched power electronic circuits, mostly constituting DC to DC and AC to DC power converters. So this was a topic. I do not want that you should try to understand the topic. You should understand the skeleton, that when we culminated on a particular topic, how we approached. So the design controller integrates the advantages of fuzzy logic and neural network into an intelligent neuro-fuzzy controller. So the research contribution or takeaways from this thesis was he or she in fact is conferred with a PhD degree in electronics engineering in the Faculty of Engineering Technology from Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. 2 patents were filed and published. One was neural network controller for power electronic circuits, is file number. And the second one was neurofuzzy controller for performance enhancement of power electronic circuits. So both of these were filed, published, and as on date, I suppose one of them has been granted also. So 6 journal publications and 1 international book chapter. Which is now you got the idea. Let us delve into the actual research framework, 8-point research framework what we talk about. Now, as you know, dictionary definition of research appears something like this: the systematic investigation into and study of materials and processes in order to establish facts and
reach new conclusion. The systematic investigation into and study of materials and processes in order to establish facts and reach new conclusion. So what is the meaning of research is materials and processes to establish the facts and reach the new conclusions. So from this definition, we get the corollary that materials, they occupy space and processes, they consume time. I suppose you understand. Materials occupy the space. Physically, you are sitting somewhere occupying the space. And we are interacting with each other. So some processes, teaching learning process is going on, wherein time is consumed. Another corollary from this definition of research goes to establishing the facts and arriving at new conclusions. Remember, space, time, establishing the facts, and arriving at new conclusion. These four parameters, if you look and if you keep in mind, then the systematic investigation revolves around four parameters. And those four parameters being space, time, processes. So we have this framework: space, time, object, process, that can be abbreviated STOP, or same space, process, object, time, that can be abbreviated as SPOT, process, object, space, time, that can be abbreviated as POST, time, object, process, space, that can be abbreviated TOPS. You see, space, time, object, process, STPO, SPOT, POST, TOPS. You go as per your convenience, whichever suits you, whether you like to stop, or you would like to spot something, or you would like to post something, or you would like to top something. But see, alphabet remains same. Meaning changes, view changes, concept changes. Stop at some discovery. Spot something new. Post something as a discovery to the world. And tops, maybe like Einstein, you top indicating that E is equal to mc square. So if you look at this 8-point framework, 7 to 8-point framework, we can get here the first point in the framework is literature review. Then opportunity identification. When we talk about, people talk about problem definition. I say problem is an opportunity. So you are identifying an opportunity. So literature review followed by opportunity identification, then hypothesis formulation, then solution analysis, then solution design, solution implementation. So whatever hypothesis we have formulated in third step, that goes as hypothesis testing, and all this goes into documentation, which will be culminated either as a research synopsis, research summary, research proposal, a research paper, or it is a PhD dissertation. So observe here that opportunity identification, hypothesis formulation, solution analysis, solution design, solution implementation, hypothesis testing, all these 6 points in the framework, they are all connected to literature review as well as documentation. This is the point we kept in mind. See, research is not a linear process. Don't try to search that I am moving from literature review to opportunity identification, to hypothesis formulation, to solution analysis, to solution design, to solution implementation, then hypothesis testing, and then documentation. It is not that way. 2023 is over.
and we are entering into 2024. We cannot roll back. But when it comes to a research process, when it comes to this research process, it is not linear that way, that January, after January, it is February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Again, it is January, but it is January 2024. So January 23 is not rolled back. That is not the case here. Opportunity identification, you have done, you have identified certain opportunity, and meanwhile, you are carrying out the literature review. Then you go for hypothesis formulation. Therefrom, again, you review the literature available to formulate your hypothesis. And while formulating the hypothesis, you identify that I am getting some new opportunity also. So you can come back. That is the reason this 8-point framework is not a linear process. It is a non-linear process. You can come back, you can go forward, and likewise. That is the reason in this diagram, opportunity identification, hypothesis formulation, solution analysis, solution design, solution implementation, and hypothesis testing, they are intervened with literature review as well as documentation. Because when you are identifying the opportunity, you must document it. Either as a problem formulation, you have to document it. Likewise, to identify the opportunity, you must do the literature review. You, for hypothesis formulation, you must document it. While formulating the hypothesis, you may again have to review the literature. Likewise, solution analysis, documentation, literature review. Documentation and literature review, they are also interconnected. You observe that when you are carrying out the literature review, out of millions of literature papers available, you are culminating only on 10, 20. So they are to be documented properly. Either you can use a bibliographical tool like Zotero we use. So there you can document it properly. Then solution design, again, literature review and documentation will be there. Solution implementation, you can literature review and documentation, and hypothesis testing. So please remember that this 8-point framework is intermingled with each other. Okay. So coming to literature review, opportunity identification, hypothesis formulation, solution analysis, solution design, solution implementation, hypothesis testing, and documentation. This is our 8-point framework for carrying out effective research, which will be either culminating into a review paper, a research synopsis, a research journal paper, or finally it can culminate into a research dissertation, PhD thesis. Literature review. Now, coming to literature review, it is an integral phase of the whole research process, which encompasses all the other phases. There is input, there is something processed, there is output. Always remember that for every one of these 8-point framework, 8 phases, every phase you can consider there is something input, which is processed by you as a researcher, and then you create certain output. For example, in literature review, input is the area of interest under investigation. When you embark upon a research project, it is not everything. You are not trying to discover the whole universe. Some point in the universe you are going to spot, and that you are going to culminate as a. So input to this phase of literature review is the area of interest under investigation. Process, you are going to explore. There is, for process, there is always going to be certain action verb. So you are going to explore. That is the process. And after exploration, the area of interest under investigation, when you explore, you get the output either as an opportunity. It is the second phase, opportunity identification, or in third phase, it is hypothesis formulation. It is analysis pattern, design pattern, prototyping, discovery, and synopsis. If you see, opportunity could be an output,
hypothesis. In other phase, it will be the output. So in literature review, depending upon at which point of the framework you are at opportunity formulation, then area of interest under investigation is going to be the input. You are exploring and identifying the opportunity. If you are in the phase of hypothesis formulation, then your area of interest under investigation will be explored to formulate the hypothesis. Likewise for analysis, design, prototyping, discovery, and synopsis. So always remember that each one of the phases of this literature review or problem formulation, analysis, hypothesis formulation, design, implementation, testing, there will be input, process, output. Input, some noun, output, some noun, process, even verb, actionable verb. Now, when we talk about opportunity identification, what is in process output here? In opportunity identification, input is the spelled out area of interest. In the first phase, whatever you have identified the area of interest. Just now, the running example, we consider it is a power converter. And we are talking about controller, intelligent controller for that. So spelled out area of interest, that goes an input to opportunity identification. Process is further exploring the area of interest, and output will be tentative title of the research. It will be tentative title of the research. In opportunity identification, you are going to have input as spelled out area of interest, and process will be exploring the area of interest, and output will be tentative title of the research. So comes hypothesis formulation. The next one, input is tentative title. Just now, before this phase, we have identified some tentative title. Hypothesis formulation will be having this tentative title as an input. Process will be the literature review on the title. See, the earlier literature review was very general. Wherefrom we culminated on the area of interest. Wherefrom we got hypothesis formulation, problem identification, rather opportunity identification, which has given us a tentative title. From tentative title as an input into hypothesis formulation, the process is literature review on the title, and output is the title and index of the research synopsis. So solution analysis. Again, input to this phase is hypothesis component. Whatever hypothesis formulation we did in the earlier phase, solution analysis will be having input as hypothesis component. From there we got. Then process will be the component analysis. What are the hypotheses we have identified? That is it possible for us to design a intelligent controller for DC to DC power converter, which will be more efficient as compared to already existing controller. So this was our hypothesis component. And from this hypothesis component, various components, we are making the component analysis. What are the components? It is an intelligent controller for DC to DC converter in the area of power electronics. So we have multiple components on which we are now focusing. The output will be hypothesis component confirmation. See, when we are talking about solution analysis, here hypothesis component will be input. Component analysis will look at that is this particular solution technically feasible, operationally feasible, financial feasible. Basically, component analysis makes us to work on the feasibility. Rather, you can say in general, it is a feasibility study, so that we can confirm the hypothesis component. Yes, technically it is possible. Technology is available. Yes, I can implement this idea. Operationally also it is possible. And financially also it is possible. You should not have some project
which is involving millions and billions of dollars that moving to the Mars. So there we talk about confirmation of the hypothesis components. Solution design, definitely once we have landed on a confirmation of hypothesis, input is the hypothesis component which has been just now confirmed, and design will be the actual development of the solution. We have identified the feasibility. We have carried out the feasibility study while confirming the hypothesis component that operationally, practically, and financially, this particular project is feasible. So solution development will be the process, develop the solution will be the action verb, and design pattern will be the output of this phase. Solution design phase will take the hypothesis component as a input. Actual development of the solution will be done here, and then design pattern. Output. Once this design pattern is there, that is to be physically implemented either by designing a prototype. So input, design pattern, process will be then synthesizing. Actually, the design pattern which we have on paper, a blueprint, you can consider that you have conceptualized the idea of something, and then you have prepared the feasibility study. Yes, this monument, maybe just for example, that sometimes or other Shah Jahan wanted to build Taj Mahal. So the idea was conceived. But is it feasible? Is it practically, operationally feasible? Time-wise it is feasible, and so on. Because when we embark upon a research project, basically, if you see the ordinances, PhD ordinances or UGC ordinances, regulations for carrying out the PhD, it is a time limit. It could be 5 years to 6 years at the most, and minimum 3 years. So time-wise also feasibility should be seen. Not only technical feasibility, operational feasibility, financial feasibility, time-wise also it should be feasible. You should not embark upon a project which will take around, most of the times when I conduct interviews in RRC, students or scholars, they come with so much of ambitious project. I remember one of the researchers who came to me, he came up with 5 ideas, excellent 5 ideas in his research area. He had identified that I am going to do this. They were 5. Each one of the idea was taking 5 years to complete. I asked him, okay, this particular first idea you take, how much time it is going to take? So बोले सर इसको तो 5 साल लग जाएंगे. बोला आपने इसमें लिटरेचर रिव्यू करना है, आपको डिजाइन करना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है, टेस्टिंग करना है, तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा काम करने के लिए आपको कितने वक्त लग जाएगा? तो बोले सर 3 से 4 साल, और अगर टाइम बराबर नहीं हो तो 5 साल. Likewise, all the 5 ideas he brought. I asked him one by one, read. ये पहला वाला आपने एरिया दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हमको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्लेटफॉर्म बनाना है. I said very nice. लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ट्रेनिंग करके हम सारे सब प्रिपेयर करेंगे. ये पर्टिकुलर काम को ही कितना वक्त लगेगा? 5 इयर्स. दूसरा वाला पॉइंट लिया हमने. दूसरे वाले पॉइंट में था कि सर हमको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करके सिंथेसाइज करना है. वी वांट टू क्रिएट द नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. उसको 5 साल लगेंगे. ऐसे 5 जो टॉपिक थे उसको 5 साल करके आई आस्क्ड हिम ओनली कि ये 5 भी टाइप के अगर अपन ये पैरेलल प्रोसेसिंग होने वाला है क्या? आप अकेले करने वाले हो, आपके साथ आपके सुपरवाइजर है. ये एक आइडिया है 5 साल ले रही है, तो 5 आइडिया को कितने साल लग जाएंगे? 25 साल, जब तक आप रिटायर हो जाओगे. यू वांट टू कल्मिनेट ऑन ए सिंगल पीएचडी और यू वांट टू हैव 5 PhDs. Then we focused on a particular topic which was very much feasible in 3 years. The fellow got the PhD, but after he acquired the PhD, he reported to me. I was not his supervisor. I was member of RRC. उन्होंने मुझे बाद में बताया कि सर आपने जो आइडिया दी थी वो आइडिया के बेसिस पे मैंने काम किया है, सिंगल आइडिया लेके, एंड यू आर वेरी राइट कि इट टुक मी अराउंड 4.5 years, 4.5 साल लग गए बोले सर मुझे. बाकी के 6 महीने में लिखाई हुई और 5 साल बाद मेरा सबमिशन हुआ, एंड दैट इज हाउ. सो सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन
phase will be having design pattern as input. Actual synthesizing of the solution will be the process. Action verb is synthesize, actually create, and the prototype will be the output. So input process output phase अगर आप देखते हैं solution implementation का, so the design pattern which we are creating out of the solution design, that will be input which will be actually synthesized into physical. So ताजमहल का एक blueprint बन गया. वो blueprint के बाद में सब पूरा मटेरियल कलेक्ट होने के बाद में 3 साल के पीरियड में आपने वो पहले तो मॉडल बनाया, वो प्रोटोटाइप, एक्चुअली देन ताजमहल क्रिएट हुआ. So that goes as a deliverable project. Hypothesis testing, जो प्रोटोटाइप हमने लिया है, the prototype we have created just now out of our 6th phase, that prototype will be now to be validated through hypothesis testing. We have to validate that prototype. कि जो purpose से this prototype was created, is it going to serve the same thing? जैसे एक सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं हम, and the program is for sorting an array into increasing order of numbers. इंटीजर की array है, उसको increasing order में अपने को करना है. बाद में हम उसको टेस्ट करते हैं. टेस्ट करने के बाद में पता चलता है कि अरे increasing order की बजाय ये decreasing order में कर रहा है. So the hypothesis is not validated. We wanted to create a program which is arranging the list of integers in ascending order, and actually it was creating in the descending order. So फिर hypothesis testing phase में हमको मालूम पड़ता है कि validate नहीं हुई है hypothesis. So we have to reframe it and again come back to validating the hypothesis. Output of this phase, hypothesis testing, एक बार आपकी confirm हो गई है कि yes, whatever hypothesis we proposed, according to that we have analyzed the problem, analyzed the solution, designed the solution, designed the pattern, designed physically fabricated the prototype. Now to validate the hypothesis on that prototype, if it is validated, hypothesis has been tested, then we will get the discovery as an output. Yes, it is possible to have an intelligent controller for a power electronics DC to DC converter which has got a better efficiency as compared to already existing controllers. So that is how hypothesis testing. इसी के parallel में documentation goes on. As I said, literature review is an integral phase of the whole research process. Likewise, documentation is also an integral phase of the whole research process that encompasses all the other phases. So output is the research synopsis writing, depending upon which phase we are talking about. So output will be research synopsis writing, technical paper writing, IPR patent drafting. So these 8 phases: literature review, opportunity identification, hypothesis formulation, solution analysis, solution design, solution implementation, hypothesis testing, and documentation. So with this, the 8-point framework I have explained. All the audience? Hello? Hello? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you have any queries on, so we can have a Yes, sir. 5-10 minutes discussion on this. Then I will move on to other detail phase of. We talked on literature review, opportunity identification, hypothesis formulation, solution analysis, solution design, solution implementation, hypothesis testing, and documentation. So these are the 8-point framework for any research project. We are talking about research project. We are not trying to learn a subject. We are talking about a research project, which can be either in the form of a review paper, it can be in the form of a journal paper, it can be in the form of a patent, it can be in the form of a research thesis. So these 8
point framework, if you remember. And let me again reiterate that these phases, though they are listed sequentially 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, but they are non-linear. You during solution implementation, you come out with some new idea, you can come back to opportunity identification and modify it. और ऐसे ही होता है. Most of the times in 25 of my candidates, when they focused on a particular title, at the time of deciding the title of the thesis, we had long discussion. और उसके बाद में I only used to dictate कि नहीं, this is going to be the title, looking at the feasibility. But during actual work on the solution analysis, solution design, most of the time scholars came back saying कि सर अपन ने टाइटल तो ये रखा है, ये टाइटल के हिसाब से अपन ने ये करने का डिसाइड किया था. However, फिजिबिलिटी स्टडी में से ये ध्यान में आता है कि ये इंप्लीमेंटेशन हमको जो करना है वो हार्डवायर कंट्रोल की बजाय वी वुड लाइक टू हैव इट ऑन ए programmable devices. So we culminated in place of hardwired hardware, we designed it through FPGA. कहीं कहीं पे हमने FPGA को एलिमिनेट करके डायरेक्ट सिम्युलेटर में ही सिम्युलेट किया. So this is how these phases will be overlapping on each other. Overlapping is a better term. They will be overlapping on each other. So, presuming that there are no questions, Sir, on this, can I have, sir? please. Zahir Sir, Alam. in your 8-point agenda, I think hypothesis formulation and hypothesis testing, these two are very critical phases. Very nice. And Very true. if we have like design and hypothesis and written and hypothesis, and when we are going for the testing, if the testing is like you said ascending का descending में result आ रहा है, so do we need to like rewrite the hypothesis, or do we need to change the solution implemented so that we can correct ourselves and we can validate the hypothesis which we have formulated? So what is to be done, sir, here? Yes. Very, very, very nice doubt you have raised. See, Mr. Zahir Alam, is it? Yes, sir. I'm from Thakur College, Mumbai. Yes, sir. My freedom given to the candidate is that whether you would like to stick to the hypothesis or you would like to change the title. You get me? We start with Yes, sir. certain, we have, after literature review, we have identified an opportunity, and based on that opportunity, we have formulated a hypothesis. Yes. Sir. And the hypothesis was something like a FPGA, intelligent controller for DC to DC converter. Suppose this is the title of the PhD thesis, which we have already registered with the university. It was intelligent controller for DC to DC power electronic converter. During a hypothesis formulation, we focused on intelligent controller. See, we kept it intelligent controller rather than mentioning FPGA controller or simulating controller. So we kept that space there, intelligent controller. Okay. So while testing the hypothesis, you find कि सर ये FPGA में पॉसिबल नहीं होता, ये सिम्युलेटर करके सकते. अपन ने अगर मैटलैब का वो जो सिम्युलेटर टूल है उसके अंदर ये जो हाइपोथेसिस है इसका मैंने डिजाइन करके अगर इंप्लीमेंट करके देखा है, सो यहाँ पे मुझे अच्छी एफिशिएंसी मिल रही है और ये सिम्युलेट करके भी फिजिबल होता है, एंड इट इज गिविंग मी द रिजल्ट, and it is possible for me to compare the result with already existing data. So आपको वो हाइपोथेसिस
को चेंज करने की जरूरत नहीं. यू हैव टू चेंज योर डिजाइन. Design, yes, yes, correct. क्योंकि कैसा है यहाँ पे, योर पॉइंट इज वेरी राइट कि हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते वक्त ही हमने, रादर पीएचडी का टॉपिक रजिस्टर करते वक्त ही वी हैव ऑलरेडी हैंडेड ओवर, रादर फ्रीज्ड ऑन के माय टाइटल. फॉर एग्जांपल माय पीएचडी टाइटल, आई विल टेल यू माय ओन. I will share with you because that is the phases which we must share. Normally, people don't share with each other such kind of things. I registered for one first of my PhD topic, which was communication protocols in computer network. Oh, okay. Communication protocol in computer networks. And I registered with this title. Communication protocol in computer network. 1993 I registered. You can imagine 1993 era when internet was just, वो हम डायल अप नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते थे समवेयर एंड सो ऑन. लिटरेचर रिव्यू कैरी होते होते ही हमारे 3 साल चले गए. And in 98 my 5 years of time was exhausted. One day I got a love letter from university that since the last 5 years you have not submitted any progress report, nothing has been shown, so your registration on the topic communication protocol in computer network is hereby exhausted. And your Okay, topic of okay. research is cancelled. Oh my God. 98 I got that later. Dr. Ashok Ghatod, who was at that time principal of Government College of Engineering, Amravati, he was my PhD supervisor. In 1998, I think in the month of December somewhere, July I got the letter, so I didn't have courage to directly go to him at that time. But in the month of December, I met him. So, सरांनी असंच विचारला. Normally he used to speak with me in Marathi. काय साधिक ते लव लेटर आलाय, मग आता आपला प्रोजेक्ट कॅन्सल झाला, पुढे काय करायचं. आय रिक्वेस्टेड हिम की सर, आय रिअलाइज that I landed into an uncharted area. Though you supported communication protocol in computer network, you supported. But then I realized that I have gone into uncharted area. And during literature review, I had identified, and today also I know, every one of you must be knowing, those who belong to computing field, there are more than 5,000 protocols. And title of the project, you see what it was. Communication protocols in computer network. What you are going to talk about? The whole life will go. 5,000 protocols. So आपको क्या करना था वहां पे? We could not culminate on feasibility study. ही फेल हो गई हमारे. Correct. And that is how by 5 years I lost. So what I learned from that mistake, I told my supervisor, Honorable Dr. Ghatod sir, sir, keep one space for me. I am coming back. But now I will come back with an area wherein I would like to come out with some deliverable. 1998 to 2000. 2 years time I have taken for searching for the research topic. Then I culminated on fuzzy neural intelligent tutoring system for World Wide Web. Okay. See that, and I let me tell you, most of the my students are in this group. 105 participants I identify here. Nilesh Kasat, then Dr. Atik himself happens to be my PhD student. I feel very proud of these students that they kept me young all the time. So 2000, I remember it was 15th of July 2000 when I register for this topic. So when I went to my guide and asked him, sir, now I would like to register under you on this topic. So topic dekha, title dekha, and first only while signing he asked me only one question.
आता होणार आहे ना हे. दिस वॉज द आता होणार आहे. मला यस सर. And it is always the case. When you are registering, you are so enthusiastic and ambitious कि you are going to क्या बोलना चाहिए, पहाड़ हिलाने वाले हो आप. ऐसा लगता है when you are registering for a PhD topic, you feel अरे I am going to be Einstein. 2 साल में तो यार मैं पूरा दुनिया को चेंज करने वाला हूँ. एंड 5 साल कैसे जाती है पता नहीं. Yes, yes, that's टिपिकली true. बोलते हैं ना कि 2 महीने, आप 2 मिनट रुको मैं 5 मिनट में आता हूँ. ऐसे ही है PhD. ऐसे ही है कि 2 साल में होंगी सर, 5 साल में नहीं होगी. I am telling you this thing, all the people who are actually embarking on a research project. Supervisor हो तो you are on the comfortable side, but if you are the research scholar, please. मेरा एक YouTube पे वो है डूज एंड डोंट्स ऑफ PhD. कभी तो भी आप जाके डूज एंड डोंट्स ऑफ PhD करके है, वो आप थोड़ा सा सुन लीजिए. 7 मिनट्स का YouTube है. Wherein I have shared my experience कि what you should do and what you should not do. One of them is, one of the points which normally research scholars take for granted is heavy dependence on PhD supervisor. Correct. मैंने दूसरे एरिया को जब सिलेक्ट किया था, फजी न्यूरल इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, फजी न्यूरल इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब. 15th of July 2000 I registered. Dr. Muhammad Atiq himself is witness to it, because Dr. Kohli, Dr. Atiq and Dr. Sajid Khan, these three were my student at that time, PhD student, who submitted my PhD thesis with university on 15th of July 2005. Oh my God. Great. Exact 5 years. 5 years. And I still remember that 15 July 2005 was Friday. 2:30 after prayer, namaz prayer के बाद में these people said कि सर अभी आपकी PhD thesis हम ले जाके सबमिट करते हैं. So they submitted on my behalf. Actually, it is submitted on behalf of the guide. But let me tell you, actual work comes in the लिटरेचर रिव्यू. यस, पहले साल में आपका लिटरेचर रिव्यू होके आप कल्मिनेट हो जाओगे प्रॉब्लम पे. बट वंस यू आर कल्मिनेटिंग ऑन ए, फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर, फ्रीजिंग ऑन ए टॉपिक टाइटल, लिटरेचर रिव्यू अगर आपका कंप्लीट हो गया, उस पे से आ गए आप. आफ्टर दैट एवरी डे लुकिंग एट द सेम एंड सेम एंड सेम थिंग, 1-2 साल के बाद में इतना नॉशियाटिक हो जाता है कि आपको लगता है क्या यार, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, टिफिन में 24 घंटे आप बिरयानी खा रहे हो. इट इज फैसिनेटिंग. वंस अपॉन अ टाइम, वंस इन अ वीक, वंस इन अ डे, यस, बट बिरयानी, यस, इट्स वेरी डिलीशियस डिश, बट एवरी टाइम यू कैनॉट हैव. आपको कुछ भी हो रहा है, भैया थोड़ा सा यार मुझे रिफ्रेशमेंट चाहिए था, कुछ स्नैक चाहिए था, उसने बिरयानी की प्लेट ले आई. आप टिफिन में ले जा रहे हो, बिरयानी. डिनर, बिरयानी. अरे सर ये चिकन बिरयानी है, ये मटन बिरयानी है, ये फिश बिरयानी है, बट अल्टीमेटली इट इज बिरयानी. 5 साल तक कि आपको न्यूरो फजी इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, और उसमें कई जो स्टूडेंट मॉडल है, टीचर्स मॉडल है, डायनामिक कोर्स जनरेटर है, एंड वॉट एवर, वही रहता है. एट द एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वेंट विथ माय PhD thesis right up, I still remember at that time it was having 7 chapters. 7th chapter was on conclusion. 6th chapter was on networking of World Wide Web intelligent tutoring systems. ITS का networking of ITS. My supervisor asked me to drop that chapter. Oh. उसको छोड़ दो, बोले अभी आपने स्टूडेंट मॉडलिंग कर लिया है, ट्यूटर मॉडलिंग कर लिया है, डायनामिक कोर्सवेयर जनरेशन कर लिया है, आपने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कर लिया है, और उसके बाद में इसका एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन किया है, और 6ठा चैप्टर है आपका कंक्लूजन, एंड यू गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स, सो फिनिश इट.
So with that idea, 5 या 6 चैप्टर में, और my thesis is 168 pages, बहुत बड़ी ऐसी thesis नहीं है. And lesson learned from there is whichever area you are comfortable, go into that area. And second point, what I was telling, don't be more dependent on your supervisor. Your supervisor, correct. On the lighter side, if I tell you the role of supervisor and scholar, ये दोनों का जो क्या रहता है, एसोसिएशन रहता है, इट इज वेरी सिमिलर टू ऑन द लाइटर साइड. एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं बताऊं आप सबको, यू विल एंजॉय दैट एग्जांपल आल्सो, बिकॉज आई नॉर्मली शेयर दैट एग्जांपल विद माय स्कॉलर्स. हाउ मच डिपेंडेंट you should be on me, you should be dependent on me with a very clear idea, like a newlywed couple, husband wife, and they are going for an issue. उनको पहले they are planning their family, or they are culminating on a opportunity identification. They got married and now they have got an opportunity identification. What is that? कि अरे we can raise a family, चलो अपन डिसाइड करते हैं कि we will have an issue. Yeah. So idea is conceived, hypothesis formulate हो गया कि any child will do. So they start. आपने जाके प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया. प्रेगनेंसी टेस्ट किसका होगा? वाइफ का. Female, yes. Female. So get tested, find that yes, conceived, the idea is conceived and the lady is pregnant. यहां से 9 months का जो पीरियड है, उसके all pains and gains are to be actually borne by the scholar. पीएचडी का टाइटल आपने फिक्स कर लिया, आइडिया कंसीव हो गई, सुपरवाइजर ने आपको जो देना था वो दे दिया कि भाई दिस इज द टॉपिक ऑन विच यू शुड वर्क. हस्बैंड जॉब इज ओवर. हस्बैंड कितना भी चाहे कि उसकी तकलीफ है मैं बर्दाश्त करूंगा, वो बर्दाश्त नहीं, वो सिर्फ उसको पैसिफाई कर सकता है. Yes. एक्चुअल फेज ऑफ 9 months has to be borne by the lady, mother lady. Correct. So role of supervisor is like a husband. He is a caretaker. He can guide. He can share something. But then pains are to be shared by. They are not shared. They cannot be shared, in fact. Yes. Correct. I thought all people, all 105 participants here and maybe 45 on YouTube, they are all intelligent enough to understand out of this. You have to understand the role of your supervisor in this context. Don't expect everything from the supervisor. Supervisor, correct. Supervisor will guide you कि yes ये काम करना है, और जहां जहां आप स्टक अप होते हो वहां पे वो बताएगा कि yes this is the correct direction you are moving in. Otherwise rest everything you have to do. हाइपोथेसिस टेस्टिंग के वक्त अगर आपको ये पता चलता है कि सर ये तो हाइपोथेसिस वैलिडेट नहीं हो रही है, तो यू वांट टू स्टिक टू द अपॉर्चुनिटी व्हिच यू हैव आइडेंटिफाइड. इफ यस, देन आपको आपका सॉल्यूशन एनालिसिस अगेन कैरियर करना पड़ता, सॉल्यूशन डिजाइन करके वो इम्प्लीमेंटेशन फिर चेंज करके, देन यू कम बैक टू एंड वेदर यू आर coming back with the validation of the same hypothesis which you have formulated. Otherwise, क्योंकि अपने फ्रेमवर्क में, यहाँ यूनिवर्सिटी के फ्रेमवर्क में, once you have given कि this is going to be fuzzy neural intelligent tutoring system for the world wide web, ये टाइटल डिसाइड करने से पहले पहला टाइटल हमारा था इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम. I went with this title and I had lot of literature with me. My supervisor told me कि intelligent tutoring system इतना वास्ट टॉपिक लेके क्या करेगा, क्या करेंगे? 5 साल में क्या क्या करेगा तू इसके ऊपर? Yes. Then you are registering under which field? I said electronics. Intelligent tutoring system ये तो AI का एरिया है, एक्सपर्ट सिस्टम है, that goes in computing. तो we electronics में लाने के लिए इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कंपोनेंट डालना पड़ता. तो सर ने मुझे पूछा कि ये इंप्लीमेंट कैसे करने वाला है तू? मैं बोला सर आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट इट फॉर यूजिंग न्यूरल नेटवर्क एंड फजी लॉजिक.
So use that term. Title में वो term डालो. Neural network based intelligent tutoring system. Okay. So it becomes now electronic side. Neural network part of electronics है. Electrical engineer. Yes. Then I said मुझे सर fuzzy logic भी use करना है और मुझे ये इंटरनेट के लिए बनाना है. Then he said कि भाई use the term fuzzy neural बोलो इसको. Fuzzy neural intelligent tutoring system for the world wide web. तो इसके अंदर अभी इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, एआई भी आ गया. AI भी आ गया, correct. And then it was possible. I am not boasting. Let me tell you, as on date, I have 7 patents filed on this. And 3 of the patents are granted on my area. Fuzzy neural intelligent tutoring system for the world wide web. During the solution design and solution implementation phase, I found that hypothesis को ही stick रहना पड़ता. Testing करते टाइम में when I identified, I said कि I have to stick to our hypothesis. आप आपका solution implementation, solution design इस तरह से change करो कि it will be aligning with your hypothesis. क्योंकि hypothesis change करते रहोगे अगर आप कि वो validate नहीं हो रही है, so it will take more than 50 years. क्योंकि वो होता ही रहेगा. It is an unending process. Research is an unending process. What my guy told me that time, and I will really share sir का जो vision था. When I remember, I went for his signature. He was that time Honorable Vice Chancellor of Baba Saheb Ambedkar Technological University, Lonere. So I went to Pune for discussion and finally taking his signature on my thesis. While signing, he made a prophecy. I will tell you that is a prophecy. By looking at those chapters, he told me कि सादिक तूने इतना काम किया है इस पे. I did not publish the paper. मैंने सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस पेपर किया था IEEE की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में. एंड देन आई टोल्ड सर कि सर मुझे इसके ऊपर सब पेटेंटिंग करना है बिकॉज आई नो दैट इज अ पेटेंटेबल. सो आई एम नॉट गोइंग टू पब्लिश द पेपर्स. सो हमने जो पब्लिकेशन के लिए पेपर भेजे थे वो भी मैंने बाद में सर के बोलने के बाद मैंने आई हैव टेकन बैक. While signing my PhD thesis, he made a prophecy that each one of your chapter is one PhD. So tomorrow when you are registering as a supervisor, तेरे अंडर कोई बच्चा काम करने के लिए आएगा तो एक एक चैप्टर उठा उठा के तुमको PhD का टाइटल करके दे. You will realize that इसमें से तुझे 3 PhD thesis you can create. I can name you the people who worked on those 3 different areas. Abrar Alvi, Mukesh Pun, Prasanna Hasabnis. These are 3 of my students, PhD scholar who got PhD. Different areas like knowledge representation, जो मेरा एक चैप्टर था, tutor modeling, जो another chapter था, student modeling, another chapter था, dynamic courseware generator, another chapter. So ये तीनों चारों चैप्टर के बेसिस पे these 3 of my students they got their individual PhD. Oh. And उन्हीं के साथ मेरा ये पेटेंट है. Some of my patents are there. So focus on it. And एक तो ये है वो PhD का जो पहला P है उसको आइसोलेट करो. Don't make it PH. Let it be P. And that P should stand for you as a person and patience. Patience. Oh. Patience. 5 साल 93 to 98 lost. 5 साल गए मेरे. But I did not lose my patience. मेरी PhD की थीसिस का जो वो रहता है dedication. I have dedicated my PhD thesis to my parent with a tagline to it who taught me the value of patience. वो 5 साल देखिए जुलाई से 2000 जुलाई 2000 से जुलाई 2005 के जो 5 साल का पीरियड है, so many ups and downs of life will be always there. Yes. So you cannot expect के the next bus will be empty, so मैं blank बस में आऊंगा तो मैं पूरा इसमें डांस करते हुए जाऊंगा. Never is going to be.
डोंट एक्सपेक्ट कि सर आगे के 5 साल में बहुत अच्छे से काम करने को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा. एज द टाइम प्रोग्रेसेस you find that your priorities go on changing, your Yes. commitments go on changing, and more commitment. Your family grows, you are professionally you get grown. Yeah. When I registered for PhD, I was simply assistant professor. But when I got my PhD, that time I became head of the department, और मेरे पास में NBA की activity and what not. 2006 I was conferred PhD by अमरावती यूनिवर्सिटी. 2005 में हमारा सबमिशन हुआ, जनवरी 2006 में मेरा फाइनल डिफेंस हुआ है, एंड फरवरी 2006 में आई वाज कन्फर्ड विद द डिग्री. आई वाज फॉर्चुनेट टू गेट द PhD degree like fuzzy neural intelligent tutoring system at the hands of Dr. Kamal Singh madam, pure researcher, and Dr. Vijay Bhatkar. He was the chief guest at the time in my convocation. So it is that way. The things are, they will come your way, but then you have to be firm. PhD के लिए you are research and development का. आज when Dr. Atik told me कि sir you speak on research and development, I suggested some other area, but then he insisted कि sir your motivational words will be of real use to the newcomers in this field. So you speak on this research and development only, and that's share the experience, because most of the things are there कि कोई guide नहीं बताता. I will tell you. I must tell you, you are the real motivator and backbone for the new researchers who are coming in the education. Thank you very much. And it was a pleasure to interact with you in online mode, sir. Thank you. Thank you so much for solving all my queries. Thank you, sir. Welcome. Any other? I have one session which I love to discuss with my research scholars. How to prepare a review paper, because most of the time I have observed कि पहला जो फेज रहता है वो है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड फ्रीजिंग ऑन ए टाइटल. और फ्रीजिंग ऑन द टाइटल के लिए बेस्ट मेथडोलॉजी आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव अंडरस्टूड इज to take the project of writing a review paper. So I have a presentation how to prepare a review paper, what a review paper is and how to prepare a review paper, so that अभी हम 10-15 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद में मे बी 2:30 वी विल स्टार्ट. इट इज 2:10. मैं थोड़ा सा इधर का मेरा ऑफिशियल वर्क आई विल फिनिश, देन 2:30 विल ज्वाइन बैक, and 2:30 to 3:30 एक brief session on how to prepare a review paper, so that आप जो भी लिटरेचर रिव्यू पे काम कर रहे हो उस पे you can design a review paper which can go into a journal. कॉन्फ्रेंस पेपर में रिव्यू मत डालिए. कॉन्फ्रेंस पेपर should never be a review paper. Review paper should always go, because review paper will spread over to somewhere around 20 से 30 पेजेस, covering as many as minimum 150 to 300 references. Review will be like that. और उसमें से आपको एक जिस्ट निकाल के you have to contribute. People feel कि सर ये रिव्यू पेपर तो क्या है, इधर से जमा करके मैशअप करना है. मैशअप करना है, यस, बट मैशअप करने के लिए भी यू रिक्वायर ए रेसिपी, और वो रेसिपी आपकी यूनिक रहती है. रेसिपी यूनिक होती है. इट इज यूनिक टू ईच रिसर्चर स्कॉलर. एंड एक चीज एट द एंड, प्लीज, आपने थोड़ा सा so much of good words you spoke about me, they came out of experience. I don't boast, I thank God कि उस तरह की सिचुएशन है. और all I owe to my students,
नॉट ओनली माई PhD स्टूडेंट्स, माई MTech स्टूडेंट, इवन BE के भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे शेयर देयर आइडियाज फ्रीली विद मी, and I feel blessed that they are free with me to share their even silly ideas. And then we realize that those silly ideas are culminated into celebrity projects. आई एम नॉट बोस्टिंग, लेकिन मैं बताऊं आपको, मेरे 2 स्टूडेंट के जो प्रोजेक्ट है, अभी हमारी अलमनी मीट हुई है इधर ओल्ड कॉलेज में. प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एट न्यू प्रोफेसर राममेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बडनेरा. Earlier, where I was Professor Rameghi Institute of Technology and Research, where from I came deputed to this college as principal. One project we did on IntelliSearch, wherein we designed a search engine which was taking help of Google search. और गूगल सर्च का जो भी सर्चिंग होके आता था उसको कंपाइल करके, मैशअप करके, पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ द यूजर, वी यूज्ड टू प्रोवाइड हिम हिट्स फ्रॉम दैट सर्च. जैसे आपने फजी न्यूरल इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब बोला है और इसको गूगल पे सर्च मारा है, व्हाट यू विल रियलाइज कि वर्ल्ड वाइड वेब वाले भी जहां जहां पे टैग्स आए हैं, वो इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम, न्यूरो फजी, ऑल दीज वर्ड्स सर्च इंजन टेक्स, एंड उससे रिलेटेड उसमें शायद इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम नहीं भी होगा, फजी न्यूरल होगा, तो भी वो हिट करके अपने को दिखाता है. सो यू गेट 10 लाख हिट्स. अब ये 10 लाख हिट्स में से यार मुझे तो 10 ही चाहिए. फॉर दैट पर्पज वी डिजाइंड ए फिल्टर, और वो फिल्टर का नाम दिया था हमने IntelliSearch. आज जब वो दैट ऑफ माई स्टूडेंट एंड माई सेल्फ, वी मेट ईच अदर, उसने बताया सर ये चैट GPT वाले वही तो कर रहे हैं, अपन ने ये काम किया था 97-98 में, और उस वक्त एग्जामिनर ने हमारे को ये पूछा था कि यार तुमने, सॉरी 98 नहीं, 2002-2003 की बात है, जब व्हेन मेरा ये PhD का टॉपिक चल रहा था, उस वक्त ये BE का प्रोजेक्ट किया था एक मेरे स्टूडेंट ने. एक बैच थी 4 बच्चों की. अभिजीत देशमुख वाज द लीडर ऑफ दैट बैच. प्रेजेंटली ही इज वर्किंग विद इंटेल कॉर्पोरेशन. MS करने के लिए उधर चला गया, वहीं पे वो भी सेटल हो गए. सो IntelliSearch, बीच में उससे मुलाकात हुई तो बोले सर IntelliSearच ये तो चैट GPT वाले वो कर रहे, वही तो कर रहे थे हमने. मतलब वो किए थे, लेकिन अपने को पेटेंट करने की कुछ अकल नहीं आई उस वक्त. अगर हम पेटेंट करते तो आज ओपन AI वालों का पार कर देते हम. दैट वाज वन. सेकंड वन वाज हमने एक वर्चुअल कीबोर्ड बनाया था उस वक्त. वर्चुअल कीबोर्ड, इट वाज जस्ट वही 2000 या 2001 की बात है. वर्चुअल कीबोर्ड, और वो वर्चुअल कीबोर्ड ऐसा था कि अगर आपने MS वर्ड, या उस जमाने में MS वर्ड नहीं था, वही था वर्ड स्टार या वर्ड करके कुछ सॉफ्टवेयर था, तो उसमें ये जो अभी ऑटो फिलिंग होता है, तो माउस बेस्ड वर्चुअल कीबोर्ड यूज्ड टू बी देयर ऑन स्क्रीन, और वो माउस बेस्ड हम ऑपरेट करते थे. उस वक्त तो ये टच स्क्रीन वगैरह नहीं थे. सो वी डिजाइंड ए वर्चुअल कीबोर्ड, और वर्चुअल कीबोर्ड वाज बीइंग ऑपरेटेड बाय माउस, और उसको हमने ऑटोफिल फीचर दिया था कि जैसे आपने W टाइप किया तो वो आपको व्हाट लिखने वाले हो, आपके E आने वाला है उसके आगे, वेयर लिखने वाले हो. सो इट यूज टू फ्लोट, ऐसे वो फ्लोट होते हुए कैरेक्टर आते थे, और उसमें से आप क्लिक करो तो फिर वो वर्ड बन जाएगा. WH डाले आपने तो फिर वो O दिखाएगा आपको, A दिखाएगा, लाइकवाइज. सो व्हाट लिखना है या हु लिखना है, अभी जो ऑटोफिल होता है. That kind of project we did long back, which we named as virtual keyboard. And I still remember कि वो बच्चों का प्रोजेक्ट जब हुआ, दिखाया गया, तो जो एग्जामिनर आए थे उन्होंने उसके ऊपर खूब क्रिटिसाइज किया था कि यार कौन यूज करेगा वो, व्हाई एनीवन, जब फिजिकल आपके पास में कीबोर्ड है तो ये वर्चुअल कीबोर्ड कोई क्यों यूज करेगा. तो बच्चे बेचारे थोड़े से वो हो गए थे, दे वर लुकिंग एट मी, एंड द एग्जामिनर वाज आल्सो स्माइलिंग लुकिंग एट मी कि सर ये आपका ही आइडिया होगा. मला यस मेरा ही आइडिया है, ऐसे पागल आइडिया मुझे आते हैं. बट लेटर ऑन वी रियलाइज, अभी हमारी जब अलमनाई की मीट हुई तो वो आई रिकॉल
ये क्या है? वर्चुअल कीबोर्ड. ममता हेड़ा या समथिंग इज द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट. उसने मुझे याद दिलाया कि सर ये प्रोजेक्ट अपन ने किए थे, इसको अपन पेटेंट करते तो. आज तो वर्चुअल कीबोर्ड, ये टच स्क्रीन आने की वजह से वर्चुअल कीबोर्ड बिकम सो कॉमन. Out of this discussion, what I want to, I do not want to boast anything, but I am just sharing my some of the life experiences. Okay, when you get an idea, ये मेरे वर्ड नहीं है, these are the words of Steve Jobs. When you get an idea and people don't laugh at it, it is not innovation. You get a new idea and people laughed at it, that means it is an innovation. Pursue it. And then you will realize that you have revolutionized the world. Silly ideas. Steve Jobs came up with an idea of a graphical user interface. एप्पल मैकिंटोश पे पहले उन्होंने लाया, उसको बाद में पूरी दुनिया ने कॉपी की. Though he also got the idea from Xerox Corporation, but then he was very much convinced कि भाई आइकॉनिक बेस्ड ही होने वाला है सर. Over the period of time, some crazy person must have, or crazy engineer must have thought over कि जैसे हम वायरलेसली एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो ये टेलीफोन वायर क्यों लगना है? If I want to talk to someone sitting in Bandera to someone sitting in Mumbai wirelessly, is it possible? किसी तो भी क्रेजी नहीं सोचा होगा. एंड पीपल मस्ट हैव लाफ्ड एट हिम कि यार अपन 2-3 मीटर के फासले पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बट 30 किलोमीटर के फासले पे नहीं कर सकेंगे वायरलेसली. यू हैव टू हैव, वो कंसेप्ट था, बट दैट कंसेप्ट हैज ब्रोकन. सिली आइडियाज आर ऑलवेज innovations. So I think we can have a 15 minutes break. Any of the participant or the host? Yes, sir. No Available? problem, sir. No problem, Sir, sir. Yes. Atik sir, you are there. Yes, sir. Sir, Yes, we sir. can have a 15 minutes break और 15 sir, मिनट yes, बाद you please suggest. Atik Yes, sir, I Yes, have sir. that another. ये इसको कंटिन्यू किया है. अभी क्या है, दूसरा एक जो सेशन है, that session Yes, I sir. can continue further elaborating on this literature review, opportunity identification, hypothesis formulation. इसको ही elaborate करके rather than the audience is intelligent enough to get the idea out of this 1 hour. रिसर्च का जो रिव्यू पेपर का अपना जो Yes, sir. मेथड है, That would be more relevant and important. for us. रिलेवेंट एंड प्रैक्टिकल, सो दैट Yes, आपको इनको कोई असाइनमेंट देना हो तो यू Yes, कैन sir. रादर Yes, sir. एक फ्रूटफुल उसमें से निकल सकता है जी, कि पीपल जी, विल sir. बी मोर हैप्पी टू बिल्कुल. क्रिएट ए रिव्यू पेपर. Yes, sir. Yes, sir. So Okay. second session we will have on that. That is how to write a review paper. sir. Yes, And रिव्यू yes, sir. पेपर. And we will meet at 2:30 is okay, sir, or 2:10 अभी right now? अभी व्हाट टाइम इट इज? इट इज 2:10, sir. 2:10. 2:10. यस, 2:10, 2:30 को yes. मिलता है सर. Yes, sir. Thank you 14:12 so much. दिखा रहा है, Yes, तो sir. 14:30. Yes. ओके, Yes, sir. थैंक यू. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So participant, we will join at again meet at 2:30. Okay. So there will be a break for 20 minutes, and then we'll join again. Thank Yes, you, sir. yes. Thank you. Thank you. Thank you so much.
Hello. Sir, are we back? Yes, sir. Okay. Hello. Yes, Hello. yes. Getting sir, you are audible. Okay, good, good. There is something known as sharing windows or select a window. Sir, Or sharing entire screen. शेयरिंग एंटायर स्क्रीन किया तो प्रॉब्लम होगा कि फिर वो मुझे वो नहीं दिखाई देता. एनीवे, स्क्रीन शेयर करूंगा मैं. Yeah, sir. Yeah. लेट मी सी. Yes, now your screen is visible, sir. Just open your PPT, sir. Yeah. So, should we start? Yes, sir. Yes. Yes. So now in this session, let us go into what is the meaning of review and how to prepare a review paper. So I am going to tell you the anatomy of a review paper, and in between I will give you the example of a review paper, and at the end we will just look at 7 key points to be remembered while framing a review paper. So outline of the review. We have to understand a review paper focusing on techno-scientific domain. It is technical as well as scientific domain to serve the purpose of presenting our analysis to the audience. One more point we must remember as a researcher: unless you publish your research, you make your research public, either by means of an article, research paper, conference paper, or by means of a patent, or by means of a book or chapter of a book. Unless you publish, there is no research. I suppose you understand. You have to market it. If you are not publishing, why it is compulsory that after you complete your PhD work, you must culminate it into a PhD dissertation, because it must be published and made available. Nowadays, because of UGC's initiative, Shodh Ganga, it is made compulsory that all your PhD thesis must be uploaded there as they are. And then, so you can see my, on Shodh Ganga, you can go and see my PhD thesis there. There are so many publishers who come forward to publish your PhD thesis free of cost. Only 5-6 copies you have to complimentary, you have to take and pay them some printing cost. So point is, why we are talking about review paper? It serves to present and summarize key findings on a particular subject. And that is how the technology progresses. When we talk about knowledge contribution, so that we are contributing something to advancement of knowledge, it can be in the form of a review paper also. Whatever work you are going to do on your topic, it is going to be definitely a presentable one by means of a PhD thesis. But then you must convert it either into a patent or convert into a research paper. And to start with, the best starting point is the literature review. And best culminating point for that literature review is to convert it into a review paper. Review papers are helpful to the authors as well as researchers and the research community in gaining the critical awareness about the evolution in specialized area. A review paper is basically a summarized version of research papers presented in academic journals on a given topic. That is a review paper. What is a review paper? A summarized version of research papers presented in academic journals on a given topic. A techno-scientific review paper manifests
that the writer has thorough understanding of the literature and has developed a capacity to formulate a useful gist summary. While no new research is presented by the author, please understand, we are talking about a review paper. You are not going to have any new research presented there. You are going to simply contribute another perspective. I told you there is STOP, SPOT, POTS, POST. Different perspective of the same thing: space, time, object, process. These are the only 4 things on which you are going to culminate all your research. Either it could be space, time, object, and processes. You are given a new perspective to it. The research as a process has been given a new perspective. So a research paper, a review paper is going to be a novel perspective leading to something innovative, further advancement of knowledge. Ultimately, for the advancement of knowledge. A state-of-the-art review. It presents mainly the most recent research in a given area. Today, you can talk about research in the large language models. Still, whatever work has been done, you can collect around 150 to 300 research papers, contribution from various researchers, and applying your own mind, you can come out with certain new idea, which will be a review. The review may offer new perspectives or an issue, or may identify an area for further research. State of the art. What is the current scenario? Where technology stands, or this area stands, where this domain knowledge stands. So state of the art review you present, and from there you can get another issue, or you may identify an area for further review. So 4 approaches to review paper is: first one, a state of the art review. Second one, a historical review. What has happened since last 20 years? 20 years is not a long period in technology development. For certain technology, you see, Boolean algebra was introduced long back in 17th century, 18th century. But the technology available to support that Boolean algebra came in 19th century. Because vacuum tube technology or maybe transistor technology was not available that time. Now we have VLSI. So you can present a historical review. First one is state-of-the-art review. Second one is a historical review, which is a survey of the evolution of a particular field of study. It may examine the early development of the field, key findings till date, key theoretical models, and their evolution. The review may consider various stages of evolution chronologically on an issue, and or may identify an area for further research. That goes as second way of preparing a review paper: historical review. First one is a state-of-the-art review. Second is a historical review. Third one, you can have a comparative review. It contrasts various views represented by various researchers on a certain topic. You can have ChatGPT compared with BERT, compared with BART, compared with Gemini. And there are so many other AI large language model tools. You can have a comparative review and identify which one is more suitable for what. A comparative review contrasts various views represented by the researchers on a certain topic. If there is some argument or certain process or hypothesis,
A comparison of the perspective review illustrates the research that supports. Such comparison may introduce a new perspective, thereby leading to another research area. So comparative review, 4 approaches. Fourth one, so what 3 we have identified? State-of-the-art review, historical review, comparative review, and then interdisciplinary review. How biologically inspired algorithms they can come into computing field. How biological human intelligence can be imitated into artificial intelligence. Interdisciplinary review. Researchers in different fields may be working on similar problems with their own perspective of the domain. A synthesis of 2 or more fields review provides insights into a given topic based on a review of multidisciplinary literature. I am talking about multidisciplinary. Though we are using the term interdisciplinary and multidisciplinary, they are co-words. In fact, multidisciplinary is sub to interdisciplinary. The review may offer an interdisciplinary perspective, may identify multidisciplinary area, and then it may lead to another area of research. So the 4 approaches to review paper is state-of-the-art review, which indicates most recent research. Historical review, which shows evolution of a particular field of study. Comparative review, contrasts various views reported. And interdisciplinary, synthesis of 2 or more fields of research. Remember, your PhD is going to be your own baby. So, frame it skillfully. Frame it skillfully. You see how prenatal care में वो mother उसका कितना care करती है. So that the outcome is a beautiful creation of God. Your PhD is going to be your own baby. Frame it skillfully. Now let us look at anatomy of a research paper. Following 9 sections constitute a review paper. There will be title, abstract, keywords, introduction, related work, discussion, conclusion, acknowledgement, and references. Let us look briefly one by one. Most of them are known to you. I call them as Nifty 9. So there are some points, though they are simple, you know, every one of us know, but then revising it will clarify idea that, oh, it is compulsory. Sometimes we overlook it. Title section consists of the title itself, the author name, address, and the affiliation. Title does not mean simply title of the paper. It should contain the title, physical, author's name, address, and his or her affiliation along with mobile, rather email ID and all. For example, this I have taken as an example of a research paper, which is a review paper published in Elsewhere journal, and it has got million hits. If you go on this website and you find out its impact factor, you'll find that this artificial intelligence machine learning application in smart production, progress, trends, and directions. This paper has got millions of hits. It is a 35 pages paper, I suppose. You can go through it. I am not here to indicate what are the content and all. We have to see the anatomy. So you can see the title, Artificial Intelligence and Machine Learning Application in Smart Production. What it indicates, it is a review paper
progress, trends, and directions. So it gives you the future direction also. 1, 2, 3, 4, 5 are the authors with their names, then their affiliation, Department of Engineering, Parthenop University, Isola C4, this, and their mail ID and all and all. So title, author's name, author's affiliation, address, everything. Abstract. An abstract is a brief summary of the review. It should act as a manifest for the reader to preview the paper. 35 pages paper पढ़ने की बजाय abstract should be a gist of it. You consider your whole paper is a sugarcane field. Sugarcane. I have particularly given the example of sugarcane field, acres of land where you can find sugarcane plants. उसको तोड़ के लाके हम उसका जूस निकालते हैं, उसको फिर प्रोसेस करते हैं, हीट अप करते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जैगरी, उसको फिर फिल्टर करते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर, और उसका फिर हम एक शुगर क्यूब बनाते हैं. 4 acres of land spread over a sugarcane field, spread over 4 acres of land, culminated into an abstract of a sugar cube. 1 इंच बाय 1 इंच बाय 1 इंच का एक शुगर क्यूब, बहुत बड़ा बता दिया फिर. So abstract is a brief summary of the review. It should act as a manifest कि भाई गन्ने का खेत कैसा रहेगा, उसमें से क्या निकलेगा, उसमें से इस तरह का एक शुगर क्यूब निकल सकता है, या फिर वो छोटी वाली 1 पाव की जैगरी स्लैब, वो छोटा सा रहता है, जिसको गुड़ की भेली बोलते हैं, छोटी 1 पाव की. That is abstract. A manifest for the reader to preview the paper. Decide if it should be explored in details. वो एब्स्ट्रैक्ट देख के उसको समझना चाहिए. जो बड़े बड़े शोरूम रहते हैं या शॉपिंग मॉल रहते हैं, उनके बाजू में साइड में जो छोटे छोटे प्रोटोटाइप दिखाए जाते हैं, दे आर द एब्स्ट्रैक्ट. कि ये इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है, ये 36 फ्लोर का शॉपिंग मॉल है, तो ये हर एक फ्लोर पे क्या क्या है, उसका एब्स्ट्रैक्ट आपको वो सामने के शोकेस में देखने को मिलता है. सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट. एंड वो देखने के बाद में वो कस्टमर डिसाइड करेगा कि मुझे ये शॉपिंग मॉल में अंदर जाना है या नहीं जाना है. इट लाइक दैट. एम्पल लिटरेचर इज अवेलेबल ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक. वो पर्टिकुलर पेपर में क्या है, इज इट ऑफ यूज टू मी और नॉट, दैट शुड बी विजिबल टू द पर्सन. IEEE पब्लिशेस एब्स्ट्रैक्ट. जैसे जर्नल पेपर्स रहते हैं, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट के जर्नल्स हैं. एब्स्ट्रैक्ट जर्नल दे आर nowadays they are available online, but those abstracts, उसे simply abstract पढ़ने के. हम हमारे IIT के जमाने में when I was doing MTech, we used to go to this magazine section, journal section, wherein हम IEEE के एब्स्ट्रैक्ट उठा के देखते थे, ये साल के कौन से एब्स्ट्रैक्ट है, क्या क्या पेपर्स है, सो दैट उसमें से काम का जो पेपर है उसका एब्स्ट्रैक्ट अगर समझ में आया, तो देन एक्चुअली यू गो टू दैट IEEE transaction and pick up the full body of the paper. Here it shows only abstract. So it is a manifest for the reader to preview the paper and to decide if should be explored in details. So abstract is that way. And typical word length for an abstract should be from 50 to 200 words. 50 ते 200 शब्दपर्यंत ते टिपिकल वर्ड लेंथ पाहिजे abstract. Don't write the full paper there. Or pura at the end you write acknowledgement as an abstract. No. So Nifty 9 में first is title, second is abstract. This is the abstract of the same paper. You can see this is hardly 150 words. Abstract, adaptation, and innovation are extremely important to the manufacturing industry. This development should lead to sustainable manufacturing using new technologies. To promote sustainability, smart production requires global perspective of smart production and technology. In this regard, thanks to intensive research efforts in the field of artificial intelligence, a number of AI-based techniques such as machine learning have already been established in the industry to achieve sustainable manufacturing. You can see that 82
articles are reviewed and classified here. ये देखिए इन्होंने ये जो पेपर है, ये पेपर है 21 में आया, रेफर्ड 21-22 में. सो इंडस्ट्री 4 से इंट्रोडक्शन है, एंड फ्रॉम 1999 टू नाउ मीन्स इट वाज फॉर 20 years period. Keywords. This section simply enumerates the key terms from the domain of the topic being reviewed. The purpose of this section is to inform the reader about the major areas of concern in the field. Conventionally, 5 to 15 keywords will be sufficient. For example, here in this paper, artificial intelligence, machine learning, applications in smart production, progress, trends and direction में उन्होंने कितने कीवर्ड दिए हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, इंडस्ट्री 4, स्मार्ट प्रोडक्शन, सस्टेनेबिलिटी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 at the most. So 8 to 15 keywords. Introduction. This section provides the reader about background information specific to the topic, which is defining the unfamiliar terms. It is introduction to the paper, not introduction to the field. Please understand. पेपर का इंट्रोडक्शन चाहिए. थेसिस में भी जब स्टूडेंट मेरे पास में उनकी थेसिस लाते हैं, सो दे स्टार्ट राइटिंग इंट्रोडक्शन टू द फील्ड. भाई, इट इज इंट्रोडक्शन टू योर थेसिस. ये कौन से एरिया पे है, इसमें आपने क्या किया है, और इसमें एट द एंड क्या मिलेगा उसको, और उसका ही एब्स्ट्रैक्ट भी रहेगा. Likewise, this review paper, you introduce the paper content rather than the area. It explains the scope of the discussion and main purpose for writing the review. क्यों लिख रहे हैं आप? ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, या हिस्टोरिकल रिव्यू है, या फिर कंपैरेटिव स्टडी है? So that is explained in the introduction. An introduction section is used to convey the relevance of the topic to the research community. Ultimately, it is going to be for your research community. और confined research area है, तो confined research community कोई रहेगा वो. It is to particular domain. It brings out the motivation behind the review. Indirectly, it reveals the type of review. हिस्टोरिकल है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, कंपैरेटिव स्टडी है, या इनोवेटिव थियोरेटिकल कुछ रिव्यू किया है आपने. सो दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड अंडर इंट्रोडक्शन. सो हियर यू कैन सी स्मार्ट प्रोडक्शन का इन्होंने इंट्रोडक्शन बताया, व्हाट इट इज. इट इज इंटरेस्टिंग टू रिमेंबर दैट द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफाइंड आर्टिफिशियल द साइंस एंड मार्किंग ऑल दैट. उसमें डिटेल में नहीं जाना है अपने को, बट व्हाट वे इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू. ये इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद में यू कैन गेट दैट I4 की enabling technology like Internet of Things and cloud computing, big data, cognitive science, virtual and augmented reality, and generating, all that. Introduction. Typical word length of introduction section is 500 to 1000. Yes. The last paragraph of the introduction should describe the organization of the rest of the body of the paper. So, last part of this paper is organized as follows. Section 2 presents the proposed methodology. Section 3 analyzes. Section 4 main contribution of the research is summarized. So, this way your introduction part should end. एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद में वो रिसर्च कम्युनिटी, वो रिसर्च पर्सन को ये ध्यान में आएगा कि ये पेपर आगे मैंने पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए. शायद एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद में उसको कुछ आइडिया लगती है कि इसमें और कुछ, आई वांटेड समथिंग मोर. सो देन इंट्रोडक्शन शुड सेटिस्फाई एपेटाइट. इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद में उसको रियलाइज हुआ कि ओ यार, ये तो चीजें नहीं, मुझे नहीं देखनी थी. सो देन ही कैन डिस्कार्ड, कैन गो टू अनदर पेपर.
This section basically is the literature survey carried by the author pertaining to the review. It describes all the references used in the present study to arrive at the conclusion. It narrates the salient points, major contribution, and citation or group of citation. A review paper may refer to as many as 150 to 300 research articles to extract the main outcome from that particular area. Related work is the section. This section basically is the literature survey carried by the author pertaining to the review paper. So related work will be around 150 to 300. Methodology. Methodological approach, bibliometric, content analysis, and all. I'm not going to go in the details, but the methodology it specifies here. Related work. The research methodology chosen for this study was a literature review. The main phases of studies were as follows. That paper you can refer afterwards. The discussion section is the body of the paper. Another discussion section. It is actual body of the paper wherein information which the reviewer has developed, and from there you directly or indirectly propose a hypothesis that out of these so much of literature, I found something new which can be rephrased into a hypothesis. Develop and support the hypothesis. While there is no particular form, there is no particular form as such. कि भाई कैसे होना चाहिए, वो discussion section कैसे होना चाहिए. But that is section must take. There are several considerations that a writer must follow when building a discussion. And what are those considerations? Don'ts. पहले don't याद रखो, फिर do's देखते हो. Don't consider a review paper simply as a summary of literature. अभी जो चैट जीपीटी को आपने बोल दिया कि इसका लिटरेचर रिव्यू जनरेट करके दे दो और उसके अंदर कौन कौन से रेफरेंसेस है वो भी दिखा दो और उसको मिला के आपने एक पेपर तैयार कर लिया. You may feel that you are smart, but chat GPT is smarter than us. One. Further, those who are accepting your papers, they are smarter than ChatGPT. Because by using ChatGPT only, they have designed an application which can now identify whether this particular paper was prepared using ChatGPT. I have given the example of ChatGPT, but any large language model, if you are using for creating a paper, review paper, please understand that when your paper goes to the publisher, उसके ऊपर वो plagiarism check नहीं मारते आजकल. There is nothing like plagiarism check. They check whether it has been generated by. वो कैप्चा वगैरह क्यों डाला है अपन ने? सिक्योरिटी चेक करते हैं आजकल कैप्चा. उसमें सब कैरेक्टर कम्स देयर, उसकी मैशअप आता है या फिर इमेज आता है, देन यू आर आइडेंटिफाइंग टू आइडेंटिफाई वेदर ए ह्यूमन यूजर इज इन्वॉल्व. यहां पे भी यू विल फाइंड दैट आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस. आई हैव रिटन वन कंबाइन, मेरा एक बुक पब्लिश किया है मैंने अलॉन्ग विथ चैट जीपीटी, सोटेरो अनलीस्ड, अमेजॉन पे अवेलेबल है एंड अच्छा पॉपुलर किताब है. उससे कुछ सारी मुझे हर महीने थोड़ी थोड़ी रॉयल्टी भी आती है, सम इन डॉलर्स, $10-15 समथिंग. दैट इज द पॉपुलरिटी. इससे ज्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिलती. यू शुड अंडरस्टैंड. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल कम सेलिब्रिटी. डे वन में वो शाहरुख खान और सलमान खान जैसों को ही मिलती है. प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर इन सम अदर एरिया वेयर इन यू हैव टू फर्स्ट एस्टैब्लिश द ऑडियंस. कमिंग बैक टू, don't consider a review paper as simply a summary of literature. Chat GPT या Bard या नया Gemini,
वो जेमिनी को यूज करके आपने मैशअप किया और ये लिटरेचर रिव्यू का ये बहुत अच्छा पेपर आ गया, डॉक्टर एम एस अली प्रिंसिपल, ये भाई मैंने बहुत अच्छा पेपर लिखा। उसको तो एब्स्ट्रैक्ट लिखने का बोला था, ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्ट लिख के देता उसको, एवरीथिंग द होल पेपर इट विल क्रिएट फॉर यू। बट द मोमेंट यू सबमिट दिस पेपर फॉर पब्लिकेशन, वो आदमी वहां पे पहला चेक मारता है कि इज इट जनरेटेड बाय एलएलएम, एंड द मोमेंट इट इज फाउंड इट कैन बी जो टाइप के पैटर्न, सी इट इज अल्टीमेटली ए सॉफ्टवेयर। इट इज अर्लियर वी यूज टू टेक ट्रेन न्यूरल नेटवर्क ऑन 1000 डेटा सेट, 1 लाख का डेटा सेट रहता था या 10 लाख का डेटा सेट रहता था, 10 लाख पैरामीटर था। Today, chat GPT like things are trained, these large language models are trained on 3.5 trillion parameters. But they are parameters. Ultimately, it has been trained. So, trained software, trained AI system, over the period of time, उसका randomness चला जाता है, उसकी क्रिएटिविटी चली जाती है। बार बार आप उसको जिस ढंग से प्रॉम्प्ट दोगे, उसके कंपैरिजन में वो जो आपको रिस्पांस देगा वो इतना मैकेनाइज्ड रिस्पांस रहता है। आप टेस्ट करके देखिए, टेक डिफरेंट एरियाज, बट यू आर द पर्सन हु इज गिविंग द प्रॉम्प्ट। एज ए ह्यूमन आप वो प्रॉम्प्ट को कितना इंटेलिजेंटली डिजाइन करके उसको दे सकोगे, उतना ही इंटेलिजेंटली उसका आंसर उधर से आएगा। डोंट कंसीडर दैट चैट जीपीटी इज नो ऑफ ऑल। नो ऑफ ऑल ऐसा है कि मैकेनाइज्ड वे से जो एआई बेस्ड उसको ट्रेनिंग हुई है फॉर 3.5 ट्रिलियन पैरामीटर्स, उसकी ट्रेनिंग लेके जैसे ही आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो, वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ डोमेन में जाके वहां से वो ट्रेन डेटा पर से इट इंटरप्रेट समथिंग एंड इट जनरेट्स द टेक्स्ट। प्री जनरेटिव है वो, जनरेटिव एआई, इट जनरेट्स, बट वो जनरेशन जो होता है वो इनोवेटिव नहीं है, वो पैटर्न है उसमें। दैट पैटर्न कैन बी वेरी वेल इंटेलिजेंटली आइडेंटिफाई हो सकता है बाय डिजाइनिंग अनदर एप्लीकेशन यूजिंग चैट जीपीटी ओनली टू आइडेंटिफाई कि भाई ये तूने लिखा है कि बार्ट ने लिखा है या जेमिनी ने लिखा है या फिर अली सर ने लिखा है। यू कैन don't consider a review paper simply as a summary of literature. Don't hide or elaborate the facts. Investigate it through literature. किसी और ने जो फैक्ट बताया है उसको या तो हाइड भी मत करो या फिर इलेबोरेट भी मत करो। स्काई इज ब्लू वो फैक्ट है, उसको और कौन से ढंग से आप बताओगे और ये बोलोगे कि अली सर का डिस्कवरी है। स्काई इज ब्लू, ग्रास इज ग्रीन, क्या उसमें आपने इनोवेट किया? डोंट हाइड और इलेबोरेट द फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेट इट थ्रू लिटरेचर। डोंट कमेंट ऑन द रिजल्ट ऑलरेडी आर्ग्यूड। जो रिजल्ट ऑलरेडी आर्ग्यू हो चुका है, उसने बेचारे ने जर्नल का पेपर लिखा है, इट हैज बीन एक्सेप्टेड, इट हैज गॉट हिट रेशियो, द सेम पेपर हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय अदर रिसर्चर्स फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। उसके ऊपर आप कमेंट या आर्ग्यू मत कीजिए। वो फैक्ट वैसा है, वो फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ में क्लब करने के बाद में तीसरा कुछ इनोवेटिव आइडिया आपको जर्मिनेट होता है, यस यू कैन प्रेजेंट इट। So don't में क्या है, don't consider a review paper simply as a summary of literature. Don't hide or elaborate the facts. Don't comment on the result already argued. There are several considerations that a writer must follow building a discussion. Don'ts तो देख लिया हमने, do's में do analyze all the referred material. सिंपली एक पेपर लेके उसके अंदर 130 रेफरेंसेस है, तो यहीं से वो रेफरेंसेस में से कौन सा पोर्शन इन्होंने लिखा है उसको ही रेफर मत कीजिए। दिस इज हाउ दैट ट्री इज, इनवर्टेड ट्री इज बिल्ट। यू स्टार्ट विद वन पेपर, वो वन पेपर के जितने भी रेफरेंसेस है, जो अपने काम के रेफरेंसेस है, वो रेफरेंस के पेपर फिर निकालिए आप,
वो रेफरेंस का एक पेपर पढ़ने के बाद में उसके जो और रेफरेंसेस है उसको, दैट इज हाउ योर इन्वर्टेड ट्री इज गोइंग टू बी ब्रांच्ड आउट. So do analyze all the referred material to mine the embedded concept. उसमें से आपको डेटा माइनिंग करना है. It is not simply data mining. When you are writing a review paper, please understand that writing a review paper is not data mining, nor it is information mining. It is knowledge mining. आप सोना निकालने के लिए जा रहे हो. You are going to a gold mine, और वहां से it is quite possible that instead of gold you will receive diamond. Yes. Do analyze all the referred material to mine the embedded. Do synthesize the material from all the works and do bring out the interconnections among various papers, materials and concept you have analyzed. Simple है. 3 डोंट्स है और 3 ही डूज है. बहुत ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, बिकॉज 7 पॉइंट से ज्यादा हम याद नहीं रख सकते एक सीटिंग में. प्लीज अंडरस्टैंड. वी शुड अंडरस्टैंड अवर लर्निंग साइकोलॉजी एज वेल एज रिटेनिंग साइकोलॉजी. पहले 15-20 मिनट आपको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बाद में मोनोटोन हो जाता है. Why in between this discussion I take you to some other examples and all, so that आपकी मोनोटोनी ब्रेक हो जाए. यहाँ पे मैंने कलर क्यों अलग अलग रखे हैं? My own monotony also should be broken. इसको हमने एनिमेट क्यों किया है? The whole screen I should have shown you directly, but उसमें क्या होता है? You experience your own, recall your own experience. क्या full slide if you are showing, प्लीज रिमेंबर, या फिर आप खुद का ही रिकॉल करो, ये पूरी की पूरी स्लाइड मैंने आपको दिखा दिया राइट एट द फर्स्ट शॉट. मैं पढ़ रहा हूं, देयर आर सेवरल कंसिडरेशन दैट आर ए राइटर मस्ट फॉलो फॉर बिल्डिंग ए डिस्कशन. व्हेन आई एम रीडिंग दिस सेंटेंस, you are watching, do bring out the interconnection psychology. When you are sitting in a hall listening to a speaker and someone enters from the door, वो आदमी को या वो लेडी को आपने 25 बार देखा होगा, बट इन द हॉल एनीवन एंटर्स, वो पानी वाला भी लड़का पानी लेके अंदर आता है तो अपन सभी उसको देखते हैं. बिकॉज योर ब्रेन goes into boredom when something is same अगर उसको दिखाएगा. एंड दैट इज द रीजन आई सेड कि रिसर्च के वक्त भी आपको वो बोर्डम आता है. वही चीज चारों वक्त अगर आपको बिरयानी खिलाई जा रही है, चारों वक्त आप इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं 5 साल तक, 5 साल का नॉशिएटिक हो जाता है. लेट मी टेल यू, मुझे याद आता है कि जिस दिन मैंने मेरी पीएचडी थीसिस, आई स्टिल रिमेम्बर, फ्राइडे को हमने सबमिट किया था, वेडनेसडे की नाइट को वी कंपाइल्ड इट इनटू, जो पेपर वगैरह पूरे अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके हमने ऐसे 10 कॉपी ऑफ थीसिस पेजेस वगैरह लगा के बाइंडिंग को देने के लिए तैयार किए. इट वाज वेडनेसडे नाइट को वी वेंट टू दैट बाइंडर, और उसके पास में आई हैंडेड इट ओवर कि भाई ये, दैट फेलो सेड कि सर अभी अनफॉर्चुनेटली आई विल जस्ट टेल यू हाउ, कौन से सिनेरियो में गुजरते हम. अभी ये थोड़ी सी मोनोटोनी ब्रेक हो गई आपकी, समथिंग इंटरेस्टिंग. अरे सर अपने लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं. एक्सपीरियंस ऐसा है कि यू एक्सपेक्ट समथिंग एंड समथिंग एल्स हैपेंस. 15 तारीख 15th of July 2005 was on Friday, 14 थर्सडे, 13 वेडनेसडे, 12 ट्यूसडे, 11 मंडे, 10 संडे, 9 सैटरडे. 9 की रात को आई स्टार्टेड फॉर पुणे
टेकिंग सिग्नेचर ऑफ माय गाइड सो दैट वो पूरी थीसिस वगैरह दिखा के उनसे सिग्नेचर लेके देन आई विल कम हियर एंड बाकी फिर पूरे कॉपीज जमा करके उसको अपन बाइंडिंग को देंगे. तो इट वाज 10th. नो सैटरडे को आई वेंट पुणे. संडे को शाम को सर के साइन वगैरह लेके आई केम बैक. मंडे ट्यूसडे को पूरा कंपाइल किया हमने. वेडनेसडे की शाम को ये किया. तो मंडे को आने के बाद आई टॉक टू दैट बाइंडर. वो बोले सर 12 घंटे में हो जाता है और सूख वगैरह जाता है. बट हु न्यू, किसको पता था कि ऑन ट्यूसडे इट वाज रेनफॉल. जुलाई का महीना है. ट्यूसडे को रेनफॉल हो गया. वेडनेसडे की शाम को जब मैंने वो बाइंडर के पास में ले जाके दिया, वो बोले सर ये अभी फ्राइडे के सुबह में दे सकूंगा मैं आपको, क्योंकि ये बाइंडिंग वगैरह करके अब मैंने रात में भी रख दिया तो ये कितने भी हीटर में या बल्ब में मैंने रखा. आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 जुलाई. तो ये सूखेगा नहीं. दैट वे. So what was anticipated? You cannot predict. But ये Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, these 5 days were so hectic. I still remember I came back from that binder's shop at home around 8:30. I remember जिंदगी में पहली बार वो दिन मुझे याद है when I slept at 8:45. 15 मिनट बाद I was just watching some program. 8:30 का कोई प्रोग्राम आता था उस वक्त, आई एम नॉट रिकॉलिंग. और वो प्रोग्राम देखते देखते 8:45 I went into sound sleep and got up next day, Thursday को 9:30 in the morning. Now, almost 12 hours. You can see how much it takes. So be prepared for this. Do's and don'ts में directly, indirectly ये भी do's and don'ts है. We are talking about research preview paper, but then research thesis भी जब आप करते हो, लिखते हो या उसके ऊपर काम करते हो, तो you have to be very energetic. Don't feel exhausted. The day you feel exhausted, you are exhausted. आप याद रखिए. As it is said, no one can defeat you unless you feel yourself defeated. जिंदगी में आपको कोई नहीं हरा सकता. ये मेरा नहीं है, वो सुल्तान मूवी का डायलॉग है, वो सुना होगा आपने भी, कि अगर आप खुद हार जाओ तो हार गए. Otherwise, no one can defeat you in the world. You remember it. Any human being coming to, because when you are acquiring, you are embarking on a PhD project, it is really a project and it is demanding. Don't look at, and people normally I see, अरे सर वो तो क्या है लैंग्वेज में, वो इंग्लिश में PhD कर रहा है, वो सर वो तो आर्ट्स वाले हैं, वो तो कॉमर्स वाले हैं, उनको तो एम्पल है, ये सर्वे करते हैं. Every PhD is equally time taking and it is a task. Don't go as per domain कि भाई I am from engineering technology तो मुझे बहुत काम करना है, वो या आर्ट साइंस वाला है तो उसको कुछ नहीं. Everyone, PhD means PhD. We are talking about honest work on PhD. If you want to show that this is really my baby, that is the reason I always say, remember that your PhD is going to be your baby. उसको corrupt मत करो. Lot much ethical goes when I simply speak this way, कि your PhD is your own baby. Rest, उसके बाकी के एस्पेक्ट समझने के लिए each one of participant, 100 participant यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं मुझे, plus 50+ participant on YouTube, जो भी 150-200 participant, 198 participants are there on this.
प्लीज अंडरस्टैंड दैट योर पीएचडी इज गोइंग टू बी योर ओन बेबी. उसको करप्ट मत करो, सरोगेट मदर मत बनो उसकी. इट इज योर बेबी. सो डूज एंड डोंट्स याद रखिए. यहाँ रिव्यू पेपर की बात कर रहे हैं अपन, तो रिव्यू पेपर पे से हम अपना प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करेंगे, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, और उसके ऊपर से अपनी पीएचडी बनेगी. You should be proud of showing to your anyone colleague or your students कि यार this is my PhD और ये देखिए ये इसमें मेरा, एंड उसमें कोई 100% कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए. प्लीज अंडरस्टैंड, डेल्टा एक्स कंट्रीब्यूशन इज सफिशिएंट. My earlier principal and my philosopher friend and my mentor, Dr. V.T. Ingole, सर को इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर IEE का एक पेपर उन्होंने लिखा था, उसको बेस्ट पेपर अवार्ड है. एंड वो पेपर ऐसा है कि वो एंड है, उसके बाद में उस पर कोई रिसर्च ही नहीं हो पाई वो एरिया में. क्यों? कि सर ने वहां पे आइडेंटिफाई करके व्हाई इट वाज अवार्डेड ए बेस्ट पेपर अवार्ड बाय IEE टू डॉक्टर V.T. इंगोले सर ऑन दैट. कुछ डिस्टेंस रिलेइंग पे था वो पेपर. वो पेपर में सर ने जो कंक्लूजन दिया है, वो कंक्लूजन ये है कि ये पर्टिकुलर डोमेन में कोई फर्दर रिसर्च अब पॉसिबल नहीं है. हम एक डेड एंड पे रीच हो चुके हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है. दैट इटसेल्फ इज अ कंट्रीब्यूशन. अरे आपको किसी ने बता दिया कि वहां जाने के बाद में उधर पूरा समंदर ही रहने वाला है, तो आपकी ये कार वहां पे चलेगी नहीं. दैट इटसेल्फ इज अ कंट्रीब्यूशन. नहीं तो आपको कार दौड़ाते हुए लेके जाते, पता चला समंदर में डूब गए. इट इज दैट. सो कमिंग बैक टू अवर, there are several considerations that a writer must follow for building a discussion. Do's में do analyze all the referred material, do synthesize the material, and do bring out the interconnections. Do infer the relevance and significance. Do infer the relevance and significance of the material to the topic and hand. Inference draw करते हैं. रिलीवेंस भी, इन्फ्लुएंस भी और सिग्निफिकेंस भी. एंड डू स्टैब्लिश एट द एंड, डू स्टैब्लिश ए क्लियर हाइपोथेसिस फ्रॉम द एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ द निफ्टी 9 रिगार्डिंग डिस्कशन. यहां पे देखिए आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एप्लीकेशन इन स्मार्ट प्रोडक्शन, प्रोग्रेस, ट्रेंड्स एंड डायरेक्शन. इसमें इन्होंने जो फेज 3 का जो डिस्कशन दिया है, 3.3 इज द सेक्शन. उसमें 3.3.1 बेनिफिट्स ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग इन इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट. यहाँ पे उन्होंने उनका खुद का ओपिनियन बताया है. कंक्लूजन, वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द पेपर एंड शुड बी ट्रीटेड एज वेरी क्रूशियल पार्ट, बिकॉज यहां पे आपका दिमाग आप लगा के कंक्लूड करने वाले हो. दैट आउट ऑफ दिस 300 लिटरेचर पेपर्स, रिसर्चर्स का जो एक एक पेपर पे वो जो ऑथर्स है उन्होंने 3-3, 4-4 साल काम करने के बाद में वो पेपर लिखा है, 2-2, 3-3 साल. एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से, थोड़ा सा ये साइड में जा रहा है अपना डिस्कशन, बट एक चीज उसके ऊपर भी मेरा एक टाइटल था, एक प्रेजेंटेशन है, हाउ टू रीड ए रिसर्च पेपर. हाउ टू रीड ए रिसर्च पेपर. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को, मेरी स्टूडेंट्स है, even my own, I don't I'm not scared of sharing that with you कि मेरे PhD से रिलेटेड स्टूडेंट मॉडलिंग यूजिंग न्यूरल नेटवर्क करके एक सेमिनल पेपर है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीस के ऑथर्स हैं, वो 4 ऑथर है, सतापतलू ऐसा नाम है उनका, ऐसे उनके 4-5 और ऑथर है. इट इज अ सेमिनल पेपर. I remember 35 times I have read that paper. 35 times इसलिए बोल रहा हूं मैं, उससे ज्यादा ही पढ़ा है, लेकिन पहली बार पढ़ा तो मैंने वहां पे मार्क किया था कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, 30, 4, 5, 6, 7 ऐसे पढ़ते 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 ओवर द पीरियड ऑफ 2 years I have read it full paper 35
मोर देन 35 टाइम्स। 35 इसलिए याद है कि वो लास्ट काउंट मैंने वहां पे 35 लिखा था पेंसिल से। 35th टाइम आई एम रीडिंग इट। उसके बाद में मैंने वो काउंट करना छोड़ दिया। एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू रीड इट, आई कुड गेट सम आइडिया। सी, इट वाज स्टूडेंट मॉडलिंग using only neural network. Full implementation of a student model by using neural network was designed there, tested, hypothesis, और उन्होंने उसको बहुत ही प्रोफेशनल वे से प्रेजेंट किया। एंड देयर दे हैव गिवन द फ्यूचर डायरेक्शन। डोंट कंसिडर योरसेल्फ कि वो जो उन्होंने काम किया है, मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके बाद में जब देखा तो आई रियलाइज कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10 years दे हैव बीन वर्किंग ऑन स्टूडेंट मॉडलिंग। एंड उससे पहले उन्होंने स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज करके उसको किया था, बाद में न्यूरल नेटवर्क लाया, आगे उनका फजी पे चल रहा है, उसके बाद में फजी न्यूरल भी लगाने वाले हैं। वहीं से मुझे भी आइडिया मिली। पॉइंट इज दैट जो रिसर्चर्स ने 3-4 साल रिसर्च करने के बाद में वो 5 या 10 पेजेस का पेपर लिखा है, उसको पहली रीडिंग में अगर आप समझ सकते हो, आई विल नॉट गिव एनी फर्दर कॉमेंट ऑन इट। बिकॉज व्हेन theory of relativity was proposed by Albert Einstein, he used to very clearly say कि for a particular period of time, there was only one person in the world who could understand that Einstein's theory of relativity. You guessed rightly. Who he was? He himself. उनके अलावा दुनिया में वो theory of relativity 5-10 साल तक के दूसरे लोगों को समझ भी नहीं है। उनके साथ में जो स्टूडेंट काम करने वाले थे, उन्होंने कहीं तो भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद में देन दे रियलाइज्ड एंड दे आइडेंटिफाइड एंड समवन फोन टू हिम कि वो जो आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट दिया था, अभी हमने ये कौन सी टेलीस्कोप पे देखा है, वी फाउंड दैट द जो कंसेप्ट है अपना, क्या लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अगर बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड रहा तो लाइट रेज ऑल्सो बेंड। डाइजेस्ट होती है ये आइडिया। इट वॉज प्रपोज थ्रू दैट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, अपना फिजिकल का प्रिंसिपल ये, बचपन से अपन वही पढ़ते, light travels in straight line, straight line, straight line. If a strong magnetic field it comes across, it will bend. और वो ये जो concept है, this was experimentally proved. Experimentally proved means accidentally they found while they were looking at a star through telescope. One observatory में they were looking at a star through telescope. They identified that ये स्टार के पीछे वाला जो स्टार है वो भी कैमरे में आया। तो दे वर नोइंग कह रहे यार ये पर्टिकुलर मून तो अभी जमीन के पीछे है, तो डायरेक्टली अपन यहां से अर्थ का फोटो ले रहे हैं, उसके पीछे है छुपा हुआ मून है, वो मून का फोटो कैसा है? बाय स्टार पोजिशन दे कुड आइडेंटिफाई दैट दिस पर्टिकुलर मेटियोर वाज बिहाइंड दैट स्टार, बट हाउ इट हैज बीन कैप्चर्ड बाय द कैमरा? वो टेलीस्कोप में दिखाई दे रहा था और वो कैमरे में कैप्चर हुआ। Then it was concluded कि if strong magnetic field रहा तो light rays भी bend होती है। So someone phoned, I have tested your theory. Einstein said, what is surprise in it? मैंने तो 1905 में ही बोल दिया था यार। Crucial part of the paper, now come back, conclusion part में। कंक्लूजन पार्ट में आपको जो इनोवेटिव आइडिया ये पूरा मैशअप करने के बाद आई है, इट विल डेफिनेटली कम। ईमानदारी से कोई भी पेपर को आप पहली दूसरी तीसरी बार पढ़ो, पहली बार में समझ में नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्ट की तो 3-4 बार पढ़ने के बाद में समझ में आता है, तो फिर अपन इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। इंट्रोडक्शन समझ में आने के बाद में देन वी गो टू पेपर। और आप ये सोचते यार मैंने पहली बार पढ़ा सर कुछ भी समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है।
कुछ भी समझ में नहीं आया इसका मतलब है यू आर लर्निंग। अगर समझ में आ जाता तो फिर क्या सीखे आपने? माई गाइड डॉक्टर सुब्बाराव एट IIT यूज्ड टू टेल मी कि व्हेन यू आर स्टक अप देन ओनली यू आर लर्निंग, इफ यू आर नॉट स्टक अप दैट मीन्स आपको सब मालूम था। आप मुझे बताइए, अमरावती, आई कम फ्रॉम माई होम जमील कॉलोनी टू बडनेरा इंजीनियरिंग कॉलेज एंड देयर इज अ पर्टिकुलर पाथ। वो अनोइंगली मैं ऐसे गाड़ी शुरू किए तो बराबर हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे। तो हमने अमरावती से बडनेरा आने तक के की नया रास्ता कौन सा सीखा? क्योंकि वी आर नॉट स्टक अप एनीवेयर। व्हेन आई विल एक्सपेरिमेंट के यार इधर से रास्ते से गए तो कम टाइम लग सकता है क्या, तो देखते अपन, देन यू विल बी लर्निंग। अरे यार नया रास्ता मुझे दिखाई दिया, वेयर फ्रॉम आई कैन रीच टू दिस प्लेस फास्टर वे, उधर ट्रैफिक जाम नहीं होता है या फिर समथिंग, उधर स्पीड ब्रेकर कम है, समथिंग समथिंग। व्हेन यू आर स्टक अप अंडरस्टैंड दैट यू आर लर्निंग, पैट योरसेल्फ। कोई नई चीज पढ़ रहे हो आप और इमीडिएटली आपको समझ में नहीं आती, पैट योरसेल्फ कि अरे योर माइंड इज एक्टिव, उसको समझ में नहीं आया मतलब उसको इट इज लर्निंग। एंड एज ए टीचर, एज ए रिसर्चर, यू आर ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वी आर लाइफ लॉन्ग लर्नर। चलिए, क्रूशियल पार्ट ऑफ द पेपर, it should be conclusion, and that should, a good conclusion illustrate the key connections between major points and the hypothesis which you have built up out of that whole reading of the review papers. It brings out the significance of the review paper in a larger context of. So, conclusion part. It makes some conclusion which are arrived as a result of writing the review. Typical word length for the conclusion part is 150 to 300 words. Conclusion should end maximum 300 words में खत्म हो जाना चाहिए. For example, here you can see the conclusion part of this review paper focused on study of the state of the art ML and what यहाँ पे for the selection of documents, object methods of investigation were used, independent of experience of the researcher, objective of the document. It aimed to not only provide a comprehensive framework on the research of AI and ML, but also a starting point for integrating knowledge through this area to suggest future research paths. यहाँ पे उन्होंने रिसर्च पाथ दिखाई है. So conclusion part. Then comes acknowledgement section. Must acknowledge. Basically a thanksgiving section. Remember that you cannot research independently. Minimum आपको एक गाइड सुपरवाइजर जरूर लगेगा जो आपको रास्ता दिखाएगा. एक रास्ता दिखाने वाला लगेगा ही. It is used to acknowledge the support, and that is the reason you must acknowledge the support and guidance received from the researchers, sponsors, organization, and funding agencies. An acknowledgement section normally contains 2 to 3 sentences में खत्म हो जाना चाहिए. उसमें कोई लंबी कहानी मत लिखिए आप कि I am thankful to this. Minimum, but must acknowledge. For example, here artificial intelligence and machine learning का जो है author's contribution, all authors contributed equally to this work. See, there are 4 or 5 authors we have seen. All authors have read and published version of the manuscript. जो भी है सभी ने पढ़ा है. Funding में this work has been conducted under the framework of Italian project, funded by Regione Campania with all that. And conflict of interest, the authors declare no conflict of interest. Otherwise, copyright में सर ये मेरा है, कोई conflict of interest नहीं है. It's equal contribution. So that should be declared. Reference section enumerates in the specified format. जो review paper जहाँ पे आप publish कर रहे हो, that particular publishing house or this journal will have their own formats. IEEE फॉर्मेट रहता है या ACM का फॉर्मेट रहता है या फिर आपका जो जर्नल जहाँ पे आप पब्लिश कर रहे हो उनके टिपिकल फॉर्मेट्स रहते हैं रेफरेंस के. सो इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट ऑल द पेपर्स, बुक्स, लिटरेचर, मोनोग्राफ्स, रिपोर्ट्स, वेबसाइट, पेटेंट्स एटसेट्रा मस्ट बी referred to. They must be enumerated, which are used in the preparation of the review paper. They must be enumerated in proper format.
while there is no restriction to the number of citation in this section, वे कितने references use करना चाहिए? A typical review paper consists of around 150 to 300 research papers from the concerned domain of review. Typically 150 से 300 तक के जाना चाहिए. Typically इन्होंने दिया है 116 or something. 116 references are there in this paper, but it has been so nicely drafted. The paper has been crafted so nicely, and all the authors have contributed in such a manner that it has got millions of hits. So remember, your PhD is going to be your baby. Shape it skillfully. Shape it skillfully. Last 5, 6, 10 minutes, and we'll break. Guidelines for an effective review paper. Effective review paper बनाने के लिए कौन से simple guidelines should we remember? 7. We call it as splendid 7 rules. Splendid 7 rules. Keep your focus narrow. बहुत ज्यादा इनोवेशन, बहुत ज्यादा सर ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे. Focus should be narrow to a particular domain, उसमें भी particular topic, उसमें भी particular title, so that it can be discussed thoroughly. The moment I said that I will confine on to review paper, I have focused on a narrow domain of writing a review paper, so that we can look into it. 1.5 hour, 1 hour we have been discussing, so we could focus on. So keep your focus narrow. We can narrow down on it, so that it can be discussed thoroughly. Have a good start with a broad topic that is of some interest to you. आपके इंटरेस्ट का टॉपिक होना चाहिए वो. Where I failed, I went into uncharted area. वो do's and don'ts of PhD जो मैंने बताया है ना, उसमें एक don't ये है कि don't enter into uncharted area. ये याद रखिए आप. हम लोग ऊटी, मनाली या कश्मीर घूमने के लिए जाते हैं 3, 4, 5 दिन के लिए. We are fascinated by those picnic spots. अनचार्टेड एरिया है वो. पहली बार हम वहां जा रहे हैं, बहुत ही मजा आता है अपने को. 4, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, यस वी एंजॉय. एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट, अरे यार यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, ऐसा है, बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा. वहां पे रहने वाले जो हैबिटेट से लोग हैं उनको पूछिए आप. उन्होंने उसके ऊपर इतना सारा इन्वेस्टिगेशन करके रखा है कि जो आप नई आइडिया उनको प्रपोज कर रहे हो, वो बोलेंगे भाई इससे ज्यादा अच्छी आइडिया हमारे पास ऑलरेडी है. कि कश्मीर में जब बर्फबारी होती है तो हमने कैसे रहना चाहिए, आप वहां पे 4 दिन के लिए जाके उनको कोई मेथड बताओगे, वो बताएंगे इससे अच्छा मेथड हमारे पास ऑलरेडी है. यू विल फील कि अरे मैंने क्या नई आइडिया दी, पता चला क्या वो आइडिया ऑलरेडी है वहां, आपके लिए वो नहीं थी, बिकॉज यू आर न्यू टू दैट एरिया. वेरी सिमिलर इज द केस ऑफ PhD रिसर्च टॉपिक. अनचार्टेड एरिया में मत जाइए. आई हैव एंटर्ड इनटू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क हम सिंपली सब्जेक्ट पढ़ाते थे टेनन माम का किताब यूज करके. उसको पढ़ने के बाद में शैलो नॉलेज, ऐसा लगा कि यार खूब सारा कंट्रीब्यूशन कर सकते, विदाउट नोइंग के 5000 प्रोटोकॉल्स है यार. कौन कौन से प्रोटोकॉल पे क्या क्या बात करेंगे और क्या कंट्रीब्यूट करेंगे. सो डोंट एंटर इनटू ए अनचार्टेड एरिया. जो आपका कंफर्ट जोन है वहां पे ही रहिए आप. फॉर रिसर्च you must go out of your comfort zone to work for research area, but the area must be known to you. Uncharted. When I came back to fuzzy neural intelligent tuning system for the world wide web, what area I have selected? I asked myself कि कौन सा एरिया है जो मुझे ज्यादा फैसिनेट करता है, the area which is of interest to me. I said, I am teacher and I am involved in teaching learning process, and intelligent tutoring system is an expert system for teachers. तो ये अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है.
तो इसके ऊपर अपन इनोवेट करेंगे ना। अपने को ट्यूटरिंग या टीचिंग कैसे करना है, इसके मेथड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एट दैट टाइम व्हेन आई रजिस्टर्ड 2000, वहां पे 1986 से तो 2000 तक के अराउंड 14 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई हैव गैदर्ड। डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से लेके तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, सो माइक्रो प्रोसेसर, टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, कंपाइलर राइटिंग, टू कंप्यूटर नेटवर्क। ये सब सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद में ये रियलाइज हुआ कि यार अपना एरिया हाउ टू टीच, और हाउ टू टीच, आई एम ए लर्नर learning to teach. So how to teach effectively? If we can imitate it, our PhD topic, nothing like it. And then when I studied fuzzy logic, मैं fuzzy logic भी पढ़ाता था बच्चों को, neural network I used to teach under artificial intelligence. Then I realized कि one of the sentences I read in one of the literature by Lotfi ji, who indicated कि wherever there is a humanistic system involved, human being जहाँ पे involve होते हैं, those humanistic systems are better represented by fuzzy system, fuzzy logic, rather than crisp or binary logic. That was the starting point. Okay, as a human being, I am teaching. As a learner, as a human being, he is learning. So there is a humanistic system involved. So what can be better than fuzzy logic, fuzzy system? And that is how. So have a good start with a broad topic that is of some interest to you. आपको जो एरिया में इंटरेस्ट है वो एरिया में जाके, सब लोग उधर दौड़ रहे हैं इसलिए मैंने भी दौड़ना चाहिए, नो। यूट्यूब पे कितने चैनल्स, एवरी डे यू सी दे से चैट जीपीटी से 1 घंटे में $100 कैसे कमाना। एवरी डे यू फाइंड सम न्यू यूट्यूबर्स कम, और उनके अपने को दिखाई देते 1.3 मिलियन हिट्स, 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर, दिस। आप पहली बार उसको देखते हो क्योंकि आप वो साइट पे पहली बार गए, वहां पे आपको 1.3 मिलियन दिखते हैं। उसकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो पता चला कि यार वो आदमी 14 साल से इसी फील्ड में है। एंड दैट इज द रीजन टुडे ही इज अर्निंग $1 million पर डे। डोंट गेट फैसिनेटेड बाय दैट। अरे यार ऐसा है तो अपन भी वैसे करेंगे। यस, यू विल बी डेफिनेटली सक्सीडिंग, बट देन इट इज नॉट ओवरनाइट। रातों रात नहीं होगा। यू हैव टू हैव पेशेंस। 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं आपको when you build up your audience, and you should know the purpose. इसीलिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, यस, बिल्कुल एम्बार्क अपॉन इट, यू विल बी सक्सेसफुल। खान सर की बहुत पॉपुलैरिटी देखते हैं, he has been recently on KBC also. बैकग्राउंड देखिए आप, उन्होंने जो उस दिन बात की, if you have listened it, you will come to know कि it is not overnight. वो कोविड सिचुएशन में he was not able to reach, so someone said कि भाई अपन ये अभी आपकी शूटिंग करके अपन इसको यूट्यूब पे डालते हैं, that is how this is. We look at celebrity status today. अरे भाई वो celebrity status is not overnight, रातों रात नहीं होता वो. Nothing happens overnight. Rome was not built in a day. ये फैक्ट उतना ही ट्रू है for anything as it is true for research. रातों रात पीएचडी नहीं मिलती है, रातों रात नया सब्जेक्ट नहीं मिलता। Have a good start with a broad topic that is of some interest to you. Next, read some of the literature in the jargon. Look for a thread of the discussion that will be very specific, and that will be then leading you to some particular topic. Second is analyze, synthesize and interpret. जो कुछ भी लिटरेचर आप पढ़ रहे हो उसको एनालाइज करो, वो उसको एनालाइज करने के बाद रिफ्रेश करो, देन सिंथेसाइज एंड देन इंटरप्रीट कि वो इसका मीनिंग क्या होता है। आई विल जस्ट गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। जब अपन बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन एनालाइज करने के बाद सिंथेसाइज होके इंटरप्रिटेशन कैसा होता है। I'll just give you one example. In a physics class, the teacher was teaching that there should be gap between the two rails. रेलवेज में 2 रेल्स रहते हैं, उनके बीच में गैप होना चाहिए।
फिजिक्स में कई बार पढ़ा आपने। देयर शुड बी गैप बिटवीन द टू रेल्स, इतना ही सेंटेंस बोल के द टीचर पॉज्ड। एक स्टूडेंट वाज सरप्राइजिंगली, उसका चेहरा कुछ अलग अलग हुआ और वो उठ के खड़ा हुआ। Then he asked the teacher, सर अगर दो रेल के बीच में गैप नहीं रखेंगे तो वो ट्रेन सिंगल व्हील पे कैसी चलेगी? समझ में आया आपको? See, the teacher was talking about गैप बिटवीन द टू रेल। एक सिंगल रेल जो जाती है वो रेलवेज का रेल, मैं ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, रेल। वो रेल के बीच में जो गैप रहता है कि भाई टेम्परेचर की वजह से एक्सपैंड होगा तो इट शुड नॉट, सो देयर इज अ गैप बिटवीन द टू रेल्स। स्टूडेंट मिसअंडरस्टूड एज द गैप बिटवीन द टू रेलवेज। ये ऐसा जो गैप रहता है, एक ये रेलवे, ये एक दूसरा रेलवे, और ये दोनों के बीच में गैप रहता है। See, sentence is same, but interpretation is different. There should be gap between the two rails so that during summer season, because of heat up, the two rails will not get expanded to that extent that they will create hindrance. Analyze, synthesize, and interpret. A review paper is not simply a summary or mashup of the information you referred. For your review, you are required to analyze, synthesize, and interpret the information you studied in some meaningful way. आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि मैंने इससे क्या समझा। उसका इंटरप्रिटेशन शायद ऐसा होगा, बट मेरे हिसाब से ये इंटरप्रिटेशन है। ए ग्लास ऑफ वाटर विच इज हाफ फिल्ड, एक बोलता है कि वो आधा खाली है, कोई बोलता है आधा भरा हुआ है। थर्ड पर्सन से दैट देयर इज इंप्रूवमेंट चांस, इसको और भरने का चांस है। अलग अलग analyze, synthesize, and interpret. It is not enough to simply present the mashup you have found. You must go beyond that and explain its relevance and significance to the topic at hand. Use only academic sources. Yes, a review paper reviews the academic body of literature, articles and research presented in academic journals. ये न्यूज़पेपर में जो आइटम आते हैं वो कैची रहते हैं। यूट्यूब पे जो आदमी बोल रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है? एनीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट डजंट मीन दैट इज बाइबल। आर्टिकल्स इन जनरल मैगजीन, न्यूज ग्रुप, मीडिया डू नॉट क्वालिफाई टू बी द ऑथेंटिक सोर्सेस। पीयर रिव्यूड जर्नल क्यों बोलते हैं? कि they are reviewed by the reviewer in the domain. Document your sources. जो भी सोर्स आप रिव्यू के लिए रेफर करते हो, they must be documented. उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रेफर करके साइट करो। The material discussed in a review paper must be acknowledged by documenting the source properly. Proper documentation not only prevents writer from being accused of plagiarism, but also gives the reader a confidence, trust. Quote sparingly and properly. पैराग्राफ टू पैराग्राफ वहां से उठा के कोट करने का, ये इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, और हमारे 35 पेज का पेपर खत्म हो गया। अरे आपने क्या किया भाई? आपने उनके सबके एब्स्ट्रैक्ट निकाल के एक जगह पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दे दिया। Quote sparingly and properly. A review paper is not simply a string of mashed up from various sources. Hence, it is advisable to reserve the direct quotation for when they would definitely create a big impact. They should create a big impact. उसको वहीं पे कोट करो। पूरे थीसिस में, पूरे डिस्कशन में हर बार मैं आइंस्टाइन का कोई
फ्रेज ही यूज करते करते सभी आइंस्टाइन के फ्रेजेस यूज करके 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 सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग माई दिस, यू विल लूज द इंटरेस्ट. फिर सर आप आइंस्टाइन ने ऐसे किया, आइंस्टाइन ने ऐसे किया, आइंस्टाइन ने किया, उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला. आप क्या कर रहे हैं? यू आर ए पोस्टमैन कि भाई आइंस्टाइन साहब ने क्या बोला वो बताओ सब लोगों को, वो तो हमको भी मालूम है. आपने क्या निकाला है नया कुछ? ये स्प्लेंडिड 7 rules, though I have also referred some journal or books for this, but I have shaped or rephrased those things into simple words so that I could also understand कि यार इसका मतलब क्या होता है. इतना बड़ी बड़ी चीजें बात की उन्होंने, इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है? Quote sparingly and properly. I also derived this splendid 7 rules from one of the स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोई रिसर्च की वेबसाइट है, वहां पे उन्होंने उनके रिसर्चर्स के लिए ये दिया है. मेरा जो इसके ऊपर जो पेपर है उसमें मैंने एक्नॉलेज किया है कि दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस दिस दिस, मस्ट बी एक्नॉलेज, बट द वर्डिंग्स आर माइन. उसको मैशअप करने के बाद में यार भाई ये इतना इतना ऐसा है, इसको ये ढंग से बताएंगे तो अपने इंडियन ऑडियंस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. Choose an informative title. Yes, the title should give some indication of what lies ahead of the reader, for the reader. कुछ तो भी बिग ऐसा टाइटल दे दिया जैसे अभी अपने यहाँ पे देखा है. द टाइटल वाज सो इलैबोरेटिव कि वो टाइटल पढ़ने के बाद में अपने को समझ में आता है कि फेलो इज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड इट्स यूज इन इंडस्ट्री 4. Think of the title as something specific rather than a vague representation of your idea. देखिए एक मिसकंसेप्शन है ये, आई एम सॉरी टू से, द मिसकंसेप्शन कि अगर आपने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइटल ऐसा वैसा रखा जो किसी के समझ में नहीं आया तो यू विल फील, पीपल विल फील क्या ग्रेट. नो, सिंप्लिसिटी इज द की. कीप द थिंग वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. I will tell you, मेरा जब वाइवा हुआ, my PhD वाइवा, I still remember, it went for around 45 minutes I presented and for around 1.5 घंटा चला था वो. Atik sir was, I suppose, at that time present. And the man was from IIT. Yes, sir, I was there. You were there in Yes. that old college. Dr. Ghator Yes, sir and Yes, sir, yes. Dr. Chelpalingam from Yes, sir. IIT Yes. Delhi. Last sentence, if you remember, he told me कि how much time you have taken for completing this project. I said, sir, 5 years. It took me all 5 years. What he told me, without repeating title of your PhD thesis. What was that thesis title? A fuzzy neural intelligent tutoring system for the World Wide Web. What he told me, you have worked on this project for 5 years without repeating the title of your PhD thesis. Tell me in one sentence what you did. Abstract bhi nahi tha, one sentence. That was the last question I answered. He allowed me, you think, have your own time. आप 1-2 मिनट लो बोले सोचने के लिए, बट आई वांट ओनली वन सेंटेंस. उसको आगे ये वो नहीं चाहिए. ओनली एसिमुलेट व्हाट एवर यू डिड इन 4 एकड़ का गन्ने का खेत है, उसको एक सुगर क्यूब में बताओ आप. एंड दैट शुड बी अ सिंगल सुगर क्यूब ऑफ 1 centimeter by 1 centimeter by 1 centimeter. One sentence. I answered it. Though I was not prepared. It was an impromptu question. I never thought it. Neither my guide told me, supervisor ने मुझे बताया नहीं कि यार ऐसा कोई तो भी क्वेश्चन आता है. बट उसके बाद all my 25 candidates, I told them कि एक चीज याद रखिए कि पूरा जो आपने काम किया है उसको एक सेंटेंस में बोलते आना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी द रिपीटेशन ऑफ योर टाइटल. आई आंसर्ड इट. देखिए मेरा टाइटल क्या था कि fuzzy neural intelligent tutoring system for the World Wide Web.
He said, whatever work you did in one sentence. I said, I have developed a system for anyone, anytime, anywhere learning. Because that was the crux of the matter. I developed an intelligent system, I said. उसने उन्होंने कहा था कि टॉपिक वो नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है. I said that I have developed a system for e-learning system or something learning system for anyone, anytime, anywhere learning. So choose an informative title. The title should give some indication of what lies ahead, and think of a title as something specific rather than vague representation of your idea. Seventh, consider your audience. You must respect. Consider your audience से ज़्यादा ये है कि truly speaking, this means respect your audience. उनका time waste मत करो. More than likely, your audience will be academic peers. कोई अदर देन जिसको आपके एरिया में इंटरेस्ट नहीं है वो आके कोई पढ़ेगा नहीं. अली सर ने फजी न्यूरल इंटेलिजेंस सिस्टम्स पे इतना काम किया, 4-5 पेटेंट कर लिए, वो आपको फैसिनेटिंग लगता है. इट इज ग्रेट फॉर यू, फॉर अदर पीपल इट इज लाइक हाँ सर ने पीएचडी की, हाँ सर के पेटेंट भी है, ओके. Your audience will be academic peers. Therefore, you can have a couple of assumptions and choose a writing style, but then you should be very specific. Though your audience may lack the detailed knowledge you have about your topic, they do have similar background knowledge. So you can assume that your audience under much of the technical language, and it may not be necessary to delve great details. Focus one. So keep your focus narrow, analyze, synthesize, and interpret. Use only academic sources, document your sources, quote sparingly and properly, choose an informative title, and consider your audience. More particularly, it should be respect your audience. With this, I again make you recall your PhD is going to be your baby. Articulate it meaningfully. I told you 3 things here. But everywhere I am saying your PhD is going to be your baby. Earlier it was frame it skillfully. Lastly, articulate it meaningfully. Though it is a review paper के conclusion part में surely you will get a title for your PhD research topic. So thank you very much. I think, yeah, it's 4 o'clock, almost 4 o'clock. So, any question? Yes, participants, the session is now over and the forum is open for discussion and the questions. If anyone has any queries or the question, you can ask to Professor Ali sir, please. I always say, Atik sir knows, okay, if after a talk there are no questions, that means everything has been understood or nothing has been understood. So I am always optimistic. Two possibilities, sir. Two extreme दो possibility. या तो everything has been understood या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया. Yes, sir. तो मैं positively ये देता हूँ कि भाई everything has been understood because there is no Yes, question. sir. Yes, sir. Everything had been understood, and really, it is very appreciating and learning for all of us to have the presentation. नीलेश कासर सर को उनके पुराने दिन याद आ गए होंगे कि सर Yes, ने sir, yes, हमारी sir. ऐसी रैगिंग ली है यार. But it is full of energy, with full of energy. It is very appreciable, sir. Thank you, sir. Thank you. So you are a role model for all of us. All of us, very right, sir. Yes, sir. Yes, sir. And
I always get motivated by just looking at you, sir. And that's why I don't know, from the day one I have attended any of the session, but I do not want to miss your session. Right, sir? Thank you, sir, for sparing your valuable time. Thank And you. Thank you. again, Actually, I will tell all the people that thank you for bearing with me. And last day, yesterday was your last day, but because of my other schedule. But today, at least I could, to my satisfaction. कैसा है जो भी काम करते हैं तो it should be for your satisfaction. And Atik sir has rightly said yesterday, sir, मुझे पता है कि unless you are convinced by your preparation, you will not come before the audience. So that is the reason I yesterday deferred. I was in the meeting yesterday and 4:15 तक की चली वो. But today. So any question from audience? Anybody who wish to ask something, please. I think this session you are going to make as a recorded one available Yes, to all. Yes. So Yes, sir. Also, we have live stream this session, sir. This is also available in the YouTube also, sir. क्या बात है, क्या बात है, so nice. तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है कि वो अपन ने पब्लिकली डिस्क्लोज कर दी which are otherwise between my students and myself. So, but they are for the reason that I also benefited out of those whatever we did. Definitely, I feel that my student must have got benefited. वो वक्त रहता है सर कि वहाँ पे फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं एज ए रिसर्चर. Okay, Thank you, sir, once again. Ankit, please. Yeah, sir. Somebody, Yeah. So I think there is no queries on the question. So with this, with the kind permission of Professor Ali sir, on behalf of the UGC Malvi Mission Teacher Training Center and Gadge Baba Amravati University, I express my deepest gratitude for gracing us with your profound insights and the expertise during the enlightening lecture on the research and development. That is very crucial. That's play very crucial role in the national education policy. Sir, your comprehensive understanding and the articulate of presentation have undoubtedly broadened our perspective and inspire us to delve deeper into the realm of innovation and the progress. Sir, your ability to simplify the complex concept and share the real world experience has left an indelible mark on all of us today we are present here. Your dedication to advancing the field of research and development is evidence and serve as a guiding light for aspiring researcher as well as the professional like us. Your willingness to share your knowledge and expertise reflect your generosity and commitment to the growth of the field. I, sir, once again express my heartfelt gratitude for enlightening this session. And with the kind permission of Professor Ali, sir, I would like to declare that this session will be over here. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very Have a much. nice time. Thank you. And Very happy New Year. Thank you. yes, sir. Yes, sir. Thank you. Same to you, sir. And thanks to Atik sir and Ankit sir. They have given a wonderful opportunity through this MMTC. Thank you, sir.